Well, actually, I had to give the garbage because normally it's in we I live in an apartment, so the garbage is what is it given out from door to door rather than in bungalows like they keep it outside in a big this and the collection agency comes and takes it up. There's a guy who takes everyone's trash, gives it to the agency, and they throw it. So now day one Python basics. Variables and inbuilt keywords, comments, operators, loops, and all. So we'll start with the theory part. Now overview of Python. Now how should I read your guys' comments? Preferably, fine. So firstly, let's go let's go with the contents. So overview of Python, basics of Python, Python's role in data. So let's go with contents. Um, Basics of Python and its role in data science. So firstly, that is what I want to learn. Then data types, variables, expressions, objects and functions, strings, arrays, list and tuple, set and dictionary. The most basic parts of Python basically.
Firstly, in basics of Python, we'll understand the general. So what is Python? Python is a general purpose high level language. Right? High level means that it does not require any additional coding. It is very direct. It is basic English. That is the easier it is to communicate in that language, the higher the language is. General purpose for anything you can use it, but normally we as data scientists or data science, we are going to learn it for data analysis initially. So that is going to include NumPy, Pandas. All of these are basically precursors to Excel and stuff. The way Excel was designed was using these programs, Pandas, NumPy. So the basis of this was same. Initially designed by Guido van Rossum in 1991 and developed by Python Software Foundation. There are two versions of them. One in Python 2.0 called Python 2.0 in 16th October 2000 and Python 3.0 on 3rd December 2008. Characteristics of Python. They're interpreted language because it is basically we use an interpreter to understand a language like through PyCharm, through this or HTML you directly use a text file or something, right? It's an interpreter language through an interpreter. Easy to use and learn, obviously, as I said, it's an English language, but there's certain things like it's interactive. So there are two types. There is one script format, and there is a what do you say? There's a dynamic typing, and there is what do you say script one in which directly you can type and will give you a result, but that is like for certain direct codes. But if you want proper code, we need to put it in the pip and then this. But we are going to use IPND, basically Jupyter Labs. It's a software inside Python itself that opens up in Chrome like this, as you can see over here. I'll show it to you. So over here, it opens like this. So this is you can put in text as well as codes like this one. Give an example, 5 plus 3. So it will give an output over here. This is a form of dynamic typing, I can say, but still. Now, Python's role in data science. Sorry, almost completed. So object oriented, obviously, there's a like normally you use a third person object. What I mean is like print variables or for I in this, for I in that, tuples list. We have certain objects we put in them, things we put in them. Those this way it's object oriented. Indentation means I'll go ahead. It's basically the spaces you give in between after each and every statement to show that statement is inside that particular function. Like after the if statement, you'll put an indentation. Indentation is four tab space. Basically, four spaces, which is one tab. One tab is an indent. Open source. It's open source. Basically, anyone can use it because technically there's a like there are different interpreters. Like PyCharm, if you think if you are using PyCharm, it's a very common one. I used to use it in ninth grade. But PyCharm had two editions. One was community free, the free edition, and one was the what is it, the paid version, the premium version. So I used to use the community free. That's why it's called open source. So anyone, even there are Anaconda, there is PyCharm, there is normal Python, which is Python the original, which uses this pip. So you have to use a text file and save it as python.py, and then it will work. That is how it used to work back in the day when there were no interpreters as such. And lastly, there was this one which we are using, which is Jupyter Labs, because that is I know much more convenient for my teacher to teach me in the college. Powerful third-party reviews. You can import a lot of stuff from other what is it, coding languages, other third-party softwares. Portable because you can use it anywhere in any device, something like that. Python's role in data science. Data science pipeline. Preparing data. Obviously, it can prepare your data. It will randomize data, or you can like use the data, existing raw data, and put it into proper tables and stuff. Performing exploratory data analysis using particular functions. You can let's say if you have learned SQL, you know how to merge tables, take out information from certain tables or given conditions. Like if this is the day, from this day to this date, I need the this what is it sets of information about certain people and the date of birth or something. Like in my employee guide, that is one way to do data analysis, learning from the data. So once you have understood the data, we make a pie chart or something, visualizing, understanding that pie charts, creating different graphs. Basically, better way to understand them. Now, Python third-party utilities is to perform all above mentioned operations. NumPy is to make this data. SciPy again.
It's not you. We are not going to use it. Matplotlib is data representation, visualizing basically graphs and stuff. And Pandas provides so before Matplotlib we want to do Pandas actually because it is Pandas is basically tables and stuff. Tables, charts, and charts are going to be in Matplotlib. So Pandas का use करके we are going to make Matplotlib. Data type. Data stored in memory can be of any type. So first the integer. Integer you know. So this is the I think the minimum value where it can go to is somewhere around 771,854,000,000 36 billion 372 trillion 223 zillion minus 9 so minus 9 quadrillion 223 trillion 370. You don't need to remember this, it's a range they're giving you to tell you how big is the range. Then this is I think format. This is the decimal format, and this is the I think the hexadecimal format. I think that's what it means. Floating decimal portion. Again, this is a range of values from minus 3 10 to the minus 308, which is very small, to 10 to the power 308, which is very big. And this is in plus minus, which gives you also, you can see over here how big is the decimal part. So you can understand the accuracy of the number also. And there is Boolean, which is plus minus, true, false, complex, A plus iota B wala format. String is anything that is like in letter format, inside double apostrophe or whatever. What is that called? Yeah, double apostrophes. That is string. It does not necessarily mean it should be some sort of text. It could be a number also inside a string. So if you write two inside a string, that is also a string. Inside a double quote, it is also a string. List is a again, it's a data type which kind of stores values uh, and using commas or separators or whatever. Tuple. So list is a mutable data type which you can change. Tuple is an immutable data type, which is similar to list, but it's an immutable. You cannot change. It's already written. You can convert into a list and then change and then convert into a different tuple. But the original tuple is never going to change. Variables, so we're going to learn all of that. Variable is reserved memory locations associated with its name to store value. Well, a variable, what is, have you thought of what is a variable? Variable is it varies, right? So anything that can store a varying value, right? X could be used in multiple programs. So X has multiple values which it can store from any different program. Is reserved memory location. But suppose you use it in one program, it would have a reserved memory location for that program in a particular location in your what do you say, in your desktop or somewhere where you have saved the file. It will create a temporary memory location when it is used, which is then again when it is restored, it is going to be used from there, that particular location, memory location. Basically, like we have an IP address like similar, it has an address over there. Based on the data of a variable, the interpreter allocates memory and decides what it can be stored. As I said, it stores it somewhere and the rules for Python vary. Now, variable. How can you define a variable? A variable must start with a letter or the underscore character. So, something like um, 2. If you start with 2 or something, you cannot start that way because a number can't be a variable. You see, second one is that only. A variable cannot contain any alphanumeric characters and underscore in between. So what does it mean is alphanumeric character मतलब A0 मतलब sorry, it can only contain alphanumeric characters. So sorry, A and AZ09 and so only these are allowed. You see, capital alphabets, small alphabets, and numbers from 0 to 9. 0 to 9 is any number 9 combination of those. So infinity stuff जाता है, but you can use those and underscore. But other than that, you cannot use anything like any dollar sign, any asterisk, hashtag, whatever. You cannot use any other special symbol other than this underscore and this. And you can only use alphabet or an underscore in the start of the letter. You cannot use it in the number in the start. Variable names are case sensitive because like age and this in at least in Python, this age, and this age are all different because it's case sensitive. Operations on variables, assigning values to variables. Python variables do not need explicit declaration to reserve memory space. It's like you can directly just assign A equal to 1, B equal to 1. It will just declare that A is equal to 1, so A is a variable, which is assign the value 1, but it will have a different memory, like a reserved memory location. That memory location will one, it will store.
Python variables do not need explicit declaration of reserve memory, as I said. Operand to the left of the operator is the name of the variable. So a equal to, so this left, like here, a is equal to b is equal to, but technically all these are variables. This is the actual value, right? 1. So all of these on the left of this equal to operator are variables, and this is the value. Uh, you can do it like this also, or like this. So here what they have done is they have used separators. So A have 1, B have 2, C है join. So because they have used separator for separator. मतलब A के लिए 1 यूज किया, B के लिए 2 with the commas, तो A और B के बीच में वहाँ 1 और 2 के बीच में comma. तो ऐसे उन्होंने separate किया वो. Expression. An expression is a combination of values, variables and operators. Values मतलब ये जो 1 ये राइट हैंड साइड में लिखते हुए है, जिसको असाइन कर दो वेरिएबल्स होते हैं और ऑपरेटर्स मतलब क्या इक्वल टू एक ऑपरेटर हो गया ना. That is ये खुद एक expression. Even multiplication, addition, all of that will stuff learn. I'm just giving an example over here only. The expression is evaluated using assignment operator. Assignment मतलब कि a equal to 1 assign कर दिया ना 1 value a को. So first you have to assign that value, then only we can use a as in places. Python also defines expressions only contain identifiers, literals and operators. So identifier, ये इधर अभी definition था. I was thinking like well, should I see the definition, no exact definition. Any name that is used to define a class, class आगे पढ़ेंगे, function पढ़ेंगे, variable module. Variable module तो simple है, module any module. Module मतलब a set of instructions, set of functions, or set of instructions, or set of yeah, basically different functions करने वाले एक सेट को एक मॉड्यूल कहते हैं. एंड दैट इज इधर प्री एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी बनाया हुआ रहता है, या इट इज वी कैन क्रिएट ऑल्सो वन, बट दैट रिक्वायर्स सम अदर लेवल ऑफ कोडिंग. Functions we can create on our own inside the Python itself. This I don't know. You can create inside Python, no, but there could be other forms which you compile and store. But basically, this is a module. Like example is import math. So जो भी math operation में extra वाले, other than which are already there, that will come in that module. और object is an identifier. ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफायर होता है. सो एनी बेसिकली नेम, उसका नेम जो यूज करना है आइडेंटिफाई करने के बेसिकली उसके उसका जो नाम होता है वो है ये. जैसे क्लास, एक क्लास या फंक्शन मतलब अगर मैंने लिखा स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर करके एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो स्क्वायर उसका आइडेंटिफायर हो जिसमें वो स्क्वायर करता है नंबर्स का सिंपल, वही करते हैं. Okay, literals, these are language independent terms in Python that should exist independently in any programming language. What does that mean? uh, मतलब these are what can we say? These we have defined, right? So these are literal words, phrases which we have defined. There could be strings, literals, bytes, literals, integer literals, floating. What are they? Basically, these are independent. मतलब x equal to 1, y equal to 2. X और y के जो values are अलग अलग. They're independent of each other. They're not related to the language itself because we have defined. Operators. In Python, you can implement the following operations using the corresponding tokens. Token is the smallest value, unit of value in coding, basically. Types of Python expressions, generator expression, loop, x equal to I. For I in ABC. ठीक है? तो for I in ABC, it is basically x I है, एक वेरिएबल है, एक टेम्पररी वेरिएबल है, जो A, B या C हो सकता है. सिंपल सा बात है. x equal to 1 if true, else equal to 2. तो x इक्वल टू 1 पहले डिफाइन कर दिया. इफ ट्रू तो मतलब ये बेसिकली ट्रू ही रहेगा, तो 1 ही डिफाइन हो जाएगा. और दिस इज जस्ट अ कंडीशनल एक्सप्रेशन जस्ट टू शो दैट अगर ट्रू है तो 1 रहेगा, नहीं तो 2 हो जाएगा. ऑपरेटर्स अरिथमेटिक, प्लस माइनस इनटू, ये जो स्टार है इनटू है. डिवीजन, परसेंटेज इज रिमाइंडर. डबल स्टार इज व्हाट इज पावर. एंड डबल दिस इज फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन मतलब जो ये होता है डेसिमल पार्ट निकल जाता है डिवाइड करने पे. अगर कुछ डेसिमल पार्ट आ रहा है आंसर में वो निकल जाता है. असाइनमेंट इक्वल टू एन अरिथमेटिक इक्वल टू. इसका मतलब कि असाइनमेंट इक्वल टू का मतलब है कि यू विल असाइन वैल्यू ए इक्वल टू मतलब 1 ए को असाइन हो गया.
मतलब वैल्यू ऑफ ए इज वन, बट अरेथमेटिक का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या? टू प्लस वन इक्वल टू क्या? दैट इज जस्ट एन अरेथमेटिक ऑपरेशन. कंपैरिजन डबल इक्वल टू मतलब वन इक्वल डबल इक्वल टू वन मतलब ट्रू हो जाएगा. तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल, वन नॉट इक्वल टू ट्रू है, बट वन नॉट इक्वल टू वन नॉट पॉसिबल, इट इज फॉल्स. लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हम लोग मैथ से सीखते हैं. लॉजिकल एंड और नॉट, लॉजिक दिस एंड और नॉट गेट्स यू वुड हैव लर्नड इज सिमिलर टू दैट. So, one and one, it will give you one and zero, zero. So, similar to that. But normally, it's basically multiplication, addition, or not. So, you'll see the use, you'll understand. Identity is returns truth if both variables are in the same object, like over here. Here in use case, I think it's membership, right? So, identity works similar, but so basically, like I'll give you an example. A is A. Right? Return true. True मतलब boolean value. True एक return करना. Is not मतलब false. Is not अगर true है तो true देगा, और नहीं है तो false. Membership in Norton अगर V in विनायक, अगर ये अगर है विनायक में तो V है ना, तो true वापस रिटर्न करेगा. Norton में तो V not in विनायक तो फिर false रिटर्न करेगा. Bitwise and so ये ना लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट से होता है. दिस इज नॉट नॉर्मली यूज. दिस सी एंड हो या जो है ये इधर ही है, और ये है, ये पावर है. ठीक है. ये इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस लेफ्ट शिफ्ट राइट. वंस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली. वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? माइनस वन. सिंपल ऐसे कुछ होगा. मोस्टली दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट बिट वाइज बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस पार्ट. इंडेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स ऑफ पाइथन. इट refers to the spaces that are used in beginning of the sentence. So, as you see, if के बाद डिफाइन करने के लिए जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है, ये अलग if स्टेटमेंट हो, ये if के अंदर, ये सूट वन के if के अंदर के आते हैं. इसके लिए इंडेंटेशन लगाते हैं कि इसके अंदर आते हैं ये. और ये वाले, ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके अंदर, और ये प्रिंट स्टेटमेंट इसके एल्स इंडेंटेशन डिफाइन करते हैं. So if this is the indent like here, this picture and this picture are part of this if statement. This print statement are part of this if statement. This if statement is part of this if statement. Anything is inside this, like an indentation, is inside the part of the larger, what do you say, loop or conditional statement or whatever. Indentation it refers to spaces that are used in the beginning of the statements. The statements with same indentation belong to the same group called a suit. जैसे मैंने इधर बोला, ये पूरा एक सूट वन है. इधर तक ये नहीं, ये तो जो लास्ट इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि वो सेम इंडेंटेशन में आता है इसके. तो बेसिकली इसका और इसका सेम ये है, बट ये बाकी सब जो इसके आगे है वो इसके अंदर आता है. सिंपल. पाइथन uses four spaces by default. As I said, tab, एक tab use करते हैं. Just put a tab, so that's an indentation. And normally, if you are using a proper interpreter, like मैं इधर Jupyter Labs यूज कर रहा हूँ, जो इंटरप्रेटर मतलब जो काम करता है पाइथन के साथ, उसमें अगर एंटर दबाने पे इफ स्टेटमेंट के, और अगर तूने ये जो सेमी कोलन लगाया है उसके अगर एंटर मारा तो प्रिंट उसके एग्जैक्ट वो यही कर देता, इंडेंट अपने आप कर देता. Flow control statements, decision making flow conditional statements. I'll just go to the document now, then we are going to continue. Um, I'll just previous, 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 so,
हाँ, वो करता हूँ। Flow control statements. This is a conditional statement that are executed only once. So, if else, if else, nested if, switch hand, shorthand, if else, whatever. All of these mean the same thing. It's basically that if है, if कुछ हुआ, if कोई condition हुआ तो एक number of statements execute होगा उसमें. If कोई condition हुआ तो execute होगा, अगर वो नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ उसमें से, तो यही execute होगा else और. इफ ये हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स अगर ये नहीं हुआ और ये वाला हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा. ऐसे अगर आप एक इफ एलएफ का स्टेयरकेस बनाते जाओगे, जैसे आप चेस में खेल रहे हैं, वैसे एक स्टेयरकेस बना के आप अलग अलग एलएफ एलएफ कंडीशन डाल सकते हैं. एल से होता होगा, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये नहीं तो ये, और अगर कुछ नहीं तो एल्स वाला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट चल जाएगा. बट अगर ये चल गया तो ये चलेगा नहीं. हाँ, इसमें से एक भी चल गया तो ये नहीं चलेगा. बट अगर कुछ नहीं चला तो एल्स स्टेटमेंट ही चलेगा, सिंपल. It's a conditional statement कि अगर ये if this condition, suppose a condition is given like a equal to 1 है, और आपने ऊपर डिफाइन कर रखा, पहले डिफाइन किया इक्वल टू 1. इफ a इक्वल टू 1 आपने फिर लिखा तो द ट्रू ही है, तो फिर प्रिंट a, तो 1 प्रिंट हो गया, सिंपल. ओके. पाइथन फॉर लूप इस अभी ये है एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, मतलब जब तक वो होता नहीं तब तक चलते रहे, बोलता. Python for loop is used for repeated execution of a group of statements for desired number of times. It iterates over the items of lists, tuples, strings, and dictionaries and other iterable objects. Iterable मतलब जो बार बार चल सकते हैं, iterating. A sequence of value assigned to a var in each iteration. For var in sequence statements ये होते हैं. Holds the value of item each sequence in each iteration. मतलब example is for I in विनाश. विनाश में आई के लिए प्रिंट आई. तो आई इज टेक्निकली अ टेम्पररी वेरिएबल, जो मैंने बोला था एक टेम्पररी वेरिएबल बोला था. वो विनाश को आइटरेट करता है, मतलब पहले वी लिखेगा, फिर आई लिखेगा, एन ए लिखेगा, एस लिखेगा, एच लिखेगा, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो मतलब फॉलो कैसे काम करते हैं कि इट एग्जीक्यूट्स दी रिपीटेड एग्जीक्यूशन टिल ए सीक्वेंस खत्म नहीं होता. विनाश में वी आई एन ए एस एच 6 बार है तो 6 बार रिपीट होते हैं. तो वी पहले प्रिंट करे, फिर आई प्रिंट करे, एन प्रिंट करे, ए प्रिंट करे, एक्स प्रिंट करे, एच प्रिंट करे, फिर उसके दिखेगा आगे कुछ नहीं है तो बंद से करते हैं. वाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. इसका कुछ मतलब जब वाइल ये होगा, पहले वो प्रिंट होगा, फिर देखिए है वापस वाइल, मतलब ये जब तक ट्रू है तब तक वो प्रिंट कर देगा. और द बेस्ट व्हाट आई फील इज वाइल ट्रू प्रिंट वन या प्रिंट समथिंग, कुछ भी डालो जैसे. मुझे सबसे मजा वाला ये लगता है क्योंकि ये क्रैश कर जाता है प्रोग्राम को. मैं आपको करके दिखा भी सकता हूँ, बट मैं क्रैश क्रैश तो होगा नहीं, मैं बंद तो कर सकता है जस्ट. और आपको एक झलक दिखा रहा था, यहाँ ये खोलते. एनीवेज यू गोट कम बैक टू हियर दिस, ये सब कोर्स मस्त. मोस्टली जो हम लोग अभी पहले इसमें पढ़ रहे हैं ना, ये जो पहला डॉक्यूमेंट में ओवरव्यू ऑफ पाइथन में, उसमें पूरा है नहीं, पर उसमें जितना होना चाहिए था उसका जो है, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है. फिर सेकंड पार्ट इज रीड एंड राइट फंक्शंस, जो है ये डेटा लोडिंग, स्टोरेज फाइल, ये सब उसमें आता है. तो इसमें पूरा ये जेसन फाइल्स और ये सब है, रीड राइट एंड जेसन फाइल. एंड देन लास्ट इज नमपाई जो हम सीखना है. वंस दैट इज डन, देन सेकंड स्ट्रीम आएगा दोपहर से शाम, जिसमें हम पैंडा सीखेंगे. आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मैं असाइनमेंट्स भी साइड बाय साइड करूँ क्या, बट सोचो असाइनमेंट्स ना परसों के लिए रखा, परसों रात को जो भी. और जो ये है, क्या बोलते हैं, जो लास्ट मतलब जिस दिन है एग्जाम उस दिन की सुबह वी विल डू दी पीवाई क्यूज का पार्ट. पीवाई क्यूज में क्वेश्चंस करते रहेंगे कोड करने. ओके. सो
हाँ ये फाइव टू, ये मुझे बहुत मजा आता है बात में। प्रिंट वन और टू, whatever, मुझे टू बहुत पसंद आता है। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, रुक जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, अरे यार, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे स्टॉप हो जा, अरे क्रैश हो जाएगा। अरे यार, मजे में कर दिया, अभी सजे में फंस रहे। ये बंद हो जा। डिस्कार्ड डिस्कार्ड डिस्कार्ड। उफ, हाँ इसका एक क्रैश हो जाता था और बेसिकली वो प्रिंट कर देगा इन्फिनिटी। तो जब तक वो इन्फिनिटी का था, जब तक क्रैश नहीं होता तब तक प्रिंट करते रहेगा। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो ठीक है, now let's go on to the next one, which is do while. Do while, it is not supported by Python, but it is basically कि do this while this, वही एंट्री कंट्रोल है। while में कैसे होता है कि पहले ऊपर लिखते हैं, इधर do में कैसे do ऊपर लिखते हैं, while नीचे लिखते हैं। I think it is similar, but else suit तो ठीक है, else मतलब if else तो एक लूप भी हो सकता है। ब्रेक है मतलब बीच में वो लूप जो है, अगर उसमें ब्रेक डाले तो बंद हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब वो लूप का नेक्स्ट चल जाएगा। मतलब अगर है फॉर आई इन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की लिस्ट डाला है, प्रिंट आए। और उसमें मैंने एक लिखा स्टेटमेंट, इफ आई इज इक्वल टू 2 कंटिन्यू, मतलब तो पैसे क्या प्रिंट करेगा, 1 3 4 5, टू कंटिन्यू कर लिया, मतलब स्किप कर दिया। ब्रेक में क्या होगा, मैंने ब्रेक डाला इफ आई इक्वल टू 2 पे, तो सिर्फ वन प्रिंट होगा, फिर 2 पे वो बंद हो जाएगा। पासिस passes null statement, मतलब कोई same to continue when pass occurs. तो pass is just like ignore कर दो, return भी मतलब बेसिकली फंक्शन यूज होता है मोस्टली रिटर्न। इट गिव्स बैक द कंट्रोल टू द मेन लूप। जैसे ये है एक छोटा लूप, ये कंट्रोल इसको दे दे, बड़ा लूप अगर रिटर्न डाल दें तो। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस हैश टैग कोड इनसाइड फॉर लूप, इफ कंडीशन ब्रेक डाला तो तोड़ देगा, बाहर जाएगा, तो ये इफ से बाहर जाएगा और फॉर में जाएगा। सॉरी, फॉर को ब्रेक करेगी इफ कंडीशन फॉर के अंदर, तो तोड़ देगा। वाइल टेस्ट एक्सक्यूशन कोड इनसाइड वाइल लूप, इफ ब्रेक दिस। तो वाइल में तो एक्चुअली इफ कंडीशन डालना, ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने क्या बोलते हैं तो फिर वो आपका पीछे खराब हो जाएगा। तो वाइल और एक्शन प्रॉब्लम। तो इसलिए ब्रेक से फिर मेरा कोई तरह का इफ कंडीशन डालना है कि बंद होने के लिए, तो मैं भी ब्रेक ही डालता हूँ। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस कोड इनसाइड फॉर लूप, इफ कंडीशन कंडीशन सेम, बहुत सिमिलर है सब। The range returns the sequence of numbers starting from 0 default and increment by 1 default. तो फॉर आई एक्सटेंड मैंने बोला ना 10, तो मतलब 0 से 9 प्रिंट करेगा। ठीक है, सॉरी 0 से 10 और प्रिंट करेगा 1 एग्जैक्टली। एक बार देख लेते हैं। आई थिंक वो आगे मतलब जब मैं कोड्स का दिखाऊंगा आपको समझेगा। ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, everything in Python is considered as an object. Functions. A function is a block of code that performs as per requirement, runs only when it is called. तो मतलब एक सेट ऑफ फंक्शंस, एक सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो इसमें तो बिल्ट इन फंक्शन होता है, मतलब ऑलरेडी होने वाले फंक्शन, लाइक प्रिंट इज अ फंक्शन, प्रिंट करता है तो ऐसे बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसको ऐसे डेफ लिखते हैं, तो उसका नाम लिखते हो जो फंक्शन, जैसे स्क्वायर करना, इधर वो लिखना होता है। जैसे स्क्वायर पे लिखेंगे, एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, तो ये इसके अंदर स्क्वायर कुछ भी डाल लेते हैं, वो चीज का जो पैरामीटर है उसका स्क्वायर या जो भी एक
परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म दिखाओ। विदाउट आर्ग्यूमेंट मतलब बिना ये पैरामीटर के, बिना एक डिफॉल्ट पैरामीटर, विद आर्ग्यूमेंट और नॉट रिटर्निंग वैल्यू। एक आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं करेगा, उसमें ही चला देगा। तो बेसिकली उसको आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं है, अलग से बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका पहले ही चल रहा है। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट रिटर्निंग वैल्यू, तो पहले का आर्ग्यूमेंट होगा मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू, इसके बदले आप डाल सकते हो कुछ, और रिटर्निंग वैल्यू। आर्ग्यूमेंट एक बेसिकली ये कि आप उसमें डालोगे, पैरामीटर के ये करेगा उधर, फिर वो पैरा जो भी वैल्यू डाला है आपने, उस हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करेगा। लिस्ट, इट्स अ डायनामिक डेटा ना, बेसिकली इट कैन बी वो बार बार चेंज किया जा सकता है। डायनामिक मतलब मूवमेंट बार बार हो सकती है ना, तो इसलिए बार बार चेंज किया जा सकता है। यूज स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल वेरिएबल। The element in list are stored by comma separated values using a square bracket. It can store elements in different data types. Syntax list underscore name val1 val2 val3 example x1 2.4 a। आप कुछ भी ये डाल सकते हो। आप वन डाल सकते हो, फिर आपने डेसिमल डाला, फिर आपने स्ट्रिंग डाला, और वो भी एक सिंगल कोड वाला, एक डबल कोड वाला, तो फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी डिफरेंट वैल्यूज डाल सकते हो एक ही लिस्ट में। ईच एलिमेंट और वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन होते हैं। तो मतलब इधर मैंने डाल दिया रैंडम, रैंडम इक्वल टू या एक्स, इधर जैसे एक्स है वेरिएबल नेम, जो लिस्ट नेम, और ये उसका लिस्ट। ईच एलिमेंट आर स्पेसिफिक इंडेक्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। इधर जो वन है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 2.4 इज वन। फिर बेसिकली वो माइनस हो जाता है, 1 2 3 4 नहीं, ये 0 1 2 3 ऐसे चालू होता है, जीरो से चालू होता है। लिस्ट वैल्यू ऑर्डर चेंजेबल एंड आउट डुप्लीकेट्स, मतलब अगर मैंने 1 1 भी डाल दिया तो प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग लिस्ट, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट एंड एक्सेसिंग लिस्ट। ऑपरेशन ऑन लिस्ट स्लाइसिंग होता है, मतलब कार्ड्स है, तो अब मैं बताऊंगा वो जब कोड सब करेंगे ना आपको तभी समझेगा, ये सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं। स्लाइसिंग मतलब कैसे होता है ना, एक विनायक में जैसे मैंने लिया विन, तो मैंने काट दिया ना ये पूरे स्ट्रिंग को, तो दैट इज व्हाट स्लाइसिंग, यू कैन परफॉर्म दैट। और यहाँ इवन ये पूरे लिस्ट में सिर्फ मुझे 1 और 2.4 चाहिए, ए और विनायक नहीं चाहिए, तो आप लिख सकते हो फॉर आई इन रेंज 0 to नहीं, फॉर आई इन रेंज 2 एक्स, फिर एक इंडेंटेशन आता है आई, प्रिंट एक्स आई, तो सिर्फ जीरो और वन को प्रिंट करता है, तो जीरो वैल्यू पे वन है और फर्स्ट वैल्यू पे 2.4 है, तो प्रिंट करते हैं। मैं बता के नहीं होगा, वो आपको दिखाऊंगा तो सुन लीजिए। सर मिन मैक्स होता है मतलब मिनिमम मैक्सिमम, तो अगर मैंने नंबर्स का लिखा है सीक्वेंस, तो सबसे मिनिमम वाला ही लेगा, मैक्सिमम वाला जो है देगा, सम देगा, मतलब पूरा नंबर है तो सबकी सम दे देगा। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करेगा लिस्ट और दे देगा वापस, और सॉर्ट किया तो सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में करके देगा। लिस्ट है मतलब अगर आपको एक ब्लैंक लिस्ट डिफाइन करना है, तो ऐसे लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। अपेंड एलिमेंट मतलब you should insert the element at the end of the list। डॉट अपेंड लेते हैं, डॉट काउंट दिया for a particular element। इंसर्ट दिस, अगर आपको एक एलिमेंट डालना है स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे जीरो पे मुझे वन के बदले कुछ और डालना है, तो आप इंसर्ट जीरो, फिर वो एलिमेंट जैसे टू डालना है, तो मैं 2 2.4 हो जाएगा। रिमूव एलिमेंट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं रिमूव 2.4 किया तो ये 2.4 निकालेगा, अगर दो 2.4 है तो पहला वाला 2.4 निकालेगा, या दो वन है तो पहला वाला वन जो रहेगा लेफ्ट से वो निकाल देगा। रिवर्स तो रिवर्स कर देगा, डॉट रिवर्स सॉर्ट, और रिवर्स सॉर्ट डॉट रिटर्न रहती है एक्सटेंड एंड मर्ज टू लिस्ट। मतलब मैंने दो लिस्ट बनाया x1 और x2, तो दोनों को एक्सटेंड कर दिया, तो x1 डॉट एक्सटेंड x2, तो क्या होगा, x1 के बाद x2 भी उसमें आ जाएगा, टपल। हाँ, advantage data that are related but not necessary of the same time. Couple times items are ordered, unchangeable, and allow duplicate. Triple are immutable. कि क्या है ना, आज बोलूंगा मुझे हेडफोन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो हेडफोन बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ना पहले तो हम देखते हैं, अभी भी साउंड तो आ रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। So what I'm going to say is very simple.
There is my audio. Wait a second. Alright, one of the audio products is always there. Right. Now this is fine. So what I was saying was, we have tuple. Now tuple is it is as I said, an immutable data or a chain recursive. Using syntax tuple underscore name, the tuple जो भी नाम है, तो इधर A, B, C, there could be tuple variables, tuple variable. ये tuple constructor तो tuple and ये राउंड ब्रैकेट हो कंस्ट्रक्ट कर टपल को एम्प्टी टपल बना फिर टपल से वो डाल दिया अंदर कुछ नहीं डाला तो भी टपल बन गया इन तरह से आप सीखेंगे फिर डिक्शनरी ये सब थोड़ा वैल्यूज जो है मैं अभी है ना प्रॉपर कोड पे चलता हूँ वो आपको सकता हूँ so let's go to the code proper code which is over here so copy of day one हमारा जो day one में सीखा था फिर day two में बट जो पाइथन के क्लास में फिर डाउट सॉल्विंग उसका हुआ था फिर लैब यूनिट वन इसका पूरा समरी है ये तीनों चारों के है ना टू और थ्री तो पूरा आ जाता है फिर ये पूरा होने का हम लोग नेक्स्ट इस पे जाएगा दैट इज ये डेटा स्टोरेज तो उसपे ये दो बार है रीड राइट एडजेसेंट पहले स्टार्ट करते हैं सर्विस कमेंट्स ऑपरेटर्स लूप्स फंक्शंस कंट्रोल स्टेटस एक्सेप्ट हैंडलिंग लाइब्रेरी टुडे जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब बहुत सारे हद तक है तो ये है पहले तो ये कमेंट तो बताया मैंने इसमें अभी बताया तो देर आर सिंगल लाइन में जो हैश टैग से डिफाइन होता है तो ये आपको जब प्रिंट करेंगे तो दिखेंगे नहीं पर जैसे इसमें मैंने जो प्रिंट किया उसमें 8 दिखा बिकॉज 5 प्लस सीधा लिखा 8 तो डायरेक्ट प्रिंट कर देता नॉर्मली हमको प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट लिखना पड़ता है ठीक है वो ही होता है बट दिस इज बिकॉज ये बाइनरी टाइपिंग यूज करता है मतलब डायरेक्ट प्रिंट कर देता है फिर ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये अगर ट्रिपल कोट यूज किया है तो मल्टी लाइन कमेंट ठीक है इट विल नॉट बी शोन these comments are not going to be shown inside the code output it is going to be just used for reference by the normally ये backend पे अगर सपोज एग्जांपल होता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कमांड इन एक्चुअल रियल लाइफ यूज सपोज it is data scientist I've got two three people working at the same project right so I am there and two of my colleagues are there I want to give the message to one of my colleagues but he doesn't come with the work on me what I do is when I'm doing the code, I'll write in some comments like this. कि ये इसके लिए डाला है उसके लिए डाला है मैसेज कन्वे करने के लिए तो the other developers other programmers who want to see this backend coding तो वैसे ये काम करते हैं now minus sign use for subtract print 5 minus 2 लिख सकते हो 3 आ जाएगा 5 into 3 15 5 by 3 ये डेसिमल प्रिंट करेगा बट अगर डबल डालते हैं तो नहीं होगा वन आ जाता है डेसिमल पार्ट ही निकालते हैं वो राउंड अप नहीं करते तो डेसिमल पार्ट निकाल देता है 5 to the power of 3 is 125 कोड प्रिंट कर दें बट इधर नॉर्मली आप लिख सकते हो डायरेक्ट हो जाएगा बट नॉर्मली आपको एक प्रॉपर इंटरप्रेटर में प्रिंट लिखना होता है प्रिंट ऐसे और उसके अंदर ऐसे दो ब्रैकेट डालना होता है ठीक है देन लेट्स गो टू प्रिंट टू डिस्प्ले इनपुट टू एक्सेप्ट डेटा टाइप टू चेक टाइप प्रिंट हेलो इनपुट अ नंबर मतलब इधर आपको एक नंबर डालने बोलेगा इधर 12 मैंने डाला इधर होगा कुछ नहीं तो वापस प्रिंट करता है बट वो फायदा नहीं है क्योंकि वो ऐसे काम नहीं करता वो प्रिंट नॉर्मली आप जो सिंटैक्स होता है ऐसा होता है एक्स इज इक्वल टू इंट क्योंकि मैंने इधर इंटीजर डाला बट अगर आपको नॉर्मली कुछ डालना है तो ऑप्शन नीचे प्रिंट टाइप होगा तो नॉर्मली ऐसे सिंटैक्स होता है इसका और फिर आप इसको ये करोगे तो इनपुट अ नंबर हो गया तो 12 डाला तो फिर प्रिंट करें इधर देखो आपको डबल कोट्स में है क्योंकि इधर वो प्रिंट एक्स लिखा है अलग से इधर डायरेक्टली प्रिंट करें क्योंकि डायरेक्ट है वो बोल रहा है कि मैं प्रिंट करके देता हूँ नॉर्मली आपको ऐसे प्रिंट लिखना होता है नहीं तो अगर अब मैं प्रिंट नहीं लिखूंगा तो क्या होगा देखो तो वो डबल कोट्स मारे जाते हैं मतलब अगर मैंने कुछ नहीं डाला एक्स भी नहीं डाला ये एक्स डाला तो ये प्रॉब्लम कर रहा है बट अगर मैंने सीधा डाल दिया ना तो डबल कोट्स में निकलता है बट वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए सिर्फ वो बता रहा है कि आपने डाला है बट ये एक्चुअली नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ ये सब
ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो जुपिटर लैब्स का क्वालिटी है कि वो सीधा प्रिंट करके देता है, किसी तरह ऊपर किया था प्रिंट दिखेगा। अगर प्रिंट लिखोगे तो वो डबल कोट होता है, ये सिंगल कोट है ना, वो हट जाता है, जिसे मैंने फिर दिखाया था। और दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट फ्लोट टाइप थ्री, मतलब ये देखो, तो मैं ये करूंगा ना, ये मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब कितने लाइन प्रिंट करता है, हैश टैग वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। थ्री है इंटीजर टाइप, 3.4 फ्लोट, फ्लोट मतलब ये डेसिमल वाले होते हैं। टाइप ये स्ट्रिंग है, ये सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में दोनों, तो दोनों टाइप स्ट्रिंग ही होते हैं, और डबल कोट में सिंगल कोट में। नाउ प्रिंट टाइप थ्री, now type 3 this, what is this, what we tell me integer, right? And this is going to be float and this is going to be string, and this is again integer, because माइनस है बट फिर भी इंटीजर ही है ना, प्लस माइनस दोनों होते हैं ना इंटीजर्स। now variable are used for saving data, examples of data that we use in data science, tables और एक्सेल फाइल्स, जो तीन उसके डॉट फॉर्मेट्स होता है, डॉट ओपन है एक्सेल एक्सएलएस, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डॉट सीएसवी फाइल्स होता है, टैब सेपरेटेड वैल्यू होता है टीएसवी फाइल्स, सेमीकोलन जब जो हम लोग मेनली पढ़ने वाले सीएसवी तो सेपरेटेड पढ़ेंगे, और भी अनस्ट्रक्चर्ड जो हम और आगे जो टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, टेक्स्ट ऑडियो इमेजेस पढ़े हो, एक बोलोगे प्रिंट है, उसमें ये फिर बताना है। और स्टूडेंट नेम नीलम, अगेन दिस विल जस्ट प्रिंट स्टूडेंट नेम, बट इधर भी है जस्ट प्रिंटिंग, तो स्टूडेंट नेम नीलम डिफाइन हो गया। तो अभी आगे भी इसका फायदा क्या है, जुपिटर लैब से आगे भी किधर स्टूडेंट यूज करोगे ना, तो इधर पहले नीलम है, तो आना चाहिए नीलम, इधर टाइप स्ट्रिंग, हाँ तो स्ट्रिंग आ गई, नीलम स्ट्रिंग टाइप, प्रिंट टाइप इज, तो ये फिर अभी मल्टी लाइन कमेंट, इसीलिए ये देखो ये कमेंट्स में आ गया ना, ये ट्रिपल कोट्स में, तो ये कमेंट मल्टी लाइन कमेंट है, हैशटैग सिंगल है, इसको आगे अगर हैशटैग मैंने इसको डाला, उसके नीचे आप वो नॉर्मली आ जाए, वो कमेंट देगा उसको, फिर एरर हो जाता है नॉर्मली, बट इसमें वो प्रिंट ही कर रहे हैं जुपिटर मैक्स में। प्रिंट टाइप ट्रू, बूल होता है, ट्रू और फॉल्स आप बूल कॉन्टेक्ट बुलियन वैल्यू, देन वेरिएबल्स प्रिंट इक्वल टू थ्री, तो ये थ्री प्रिंट हो जाएगा, 3.5, एक पर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, we're going to go through all of these still here somehow. We'll go fast because I want to finish this. Then I want to read that and at least दोपहर शाम तक I have to finish all of this. At least till after I eat my lunch and stuff. So what will happen is after that I want to do pandas. Pandas is kind of bigger than this. Not in terms of content, but in terms of understanding it. Still for understanding how. Tomorrow math plot list जो विजुअलाइजिंग पार्ट है, जो ग्राफ चार्ट बनाते हो, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, फिर I'll do the assignments which we were doing in the classes. I'll do those again using my understanding of the coding system I'm learning now. And once that is done, maybe the reason I'm not finding it fun for this part is simply because ये सब मैंने बहुत पहले बहुत बार किया है, मैं बहुत बोर हो गया, मुझे लिटरली बहुत इजी लग रहा है। आफ्टर ये रीड राइट में आया तभी तो ठीक लगेगा कि हाँ कुछ कर रहे हो, तो तभी दिमाग थोड़ा चलने लगा, ये मुझे याद नहीं रहता, थोड़ा पढ़ पढ़ के समझ समझ के पढ़ा पढ़ा के याद कर जाए। एंड देन नमपाई भी आएगी, थोड़ा वो भी ट्रिकी रहेगा। फिर पांडास तो बहुत ट्रिकी है एक्चुअली, मैथ कार्ड में जो उसका नेक्स्ट वर्ड उससे भी ज्यादा ट्रिकी पांडास, क्योंकि पांडास जो थोड़ा डिफाइन करना, उसका सिंटैक्स, थोड़ा सिंटैक्स मतलब द वे यू डिफाइन एनीथिंग इन दिस कोर्स, दैट सिंटैक्स, वो थोड़ा मुश्किल है उसका, याद रखना थोड़ा, बहुत थोड़ा, मतलब अगर वो समझ ले तो मैथ कार्ड आराम से समझेगा, क्योंकि वो बेसिकली उधर आप टेबल्स बनाते हो, ग्राफ मतलब टेबल्स और चार्ट जो भी बनाते हो उसके बेसिस पे आप ग्राफ बनाते हो ना, तो वो वही वैल्यू यूज करके आप वो सिर्फ उसको प्लॉट कर, उसके लिए एक अलग फंक्शन होता है मैथ कार्ड में, फिर प्लॉट करते हैं उसमें आप रेड ब्लू यूज करते हैं, अलग अलग लाइंस के लिए, ग्राफ्स के लिए बार ग्राफ, फिर अलग अलग सिंबल यूज करते होते हैं, लाइन विथ को चेंज करते हो, ग्राफ चेंज को उधर वो भी समझ, थोड़ा सा सीएसएस जैसा थोड़ा, सीएसएस जैसे बहुत स्टाइल्स बहुत चेंज करते हैं, इसको मैथ कार्ड लेना होगा। Till we go till there tomorrow afternoon, though, we thorough with a lot of it for my exam. Then I think we will go
Uh, मदद करेंगे जो किए थे लास्ट वीक से जाने से पहले तो टीचर है उसका आलू की उस परसेंट as much as possible fast fast mostly it's not very bad decision I think slowly करता मुझे आते हैं बड़ा बहुत और so this I feel very sleepy. I don't know why. I slept enough, more than enough. I think it's just that कि मैं बहुत टाइम अगर स्क्रीन कंटिन्यूस हुआ ना तो मेरा बहुत ज्यादा नींद लगा मतलब टेक्निकली नींद नहीं आ रही उल्टा ज्यादा रेडिएशन से नींद नहीं आ रही बट द थिंग इज आई एम जस्ट कंटिन्यूस हो कर करके कर करके तो मैं कंटिन्यू करता हूँ ट्राई करता हूँ थोड़ा दिमाग को शांत रखते था तो ये सब तो ठीक है तो इजी आई थिंक द सिंपल इज वेरी बोरिंग now मतलब this part is actually very boring ठीक है this part is actually pretty boring so a is equal to 3 है print a print मुझे और अगर मैंने ये डाला ना ये this string तो string में प्रिंट होगा मतलब 3 और a प्रिंट होगा ठीक है x y z equal to 9 print 9 ठीक है 9 प्रिंट हो जाएगा सीधा और हमने इधर डिफाइन के लिए एग्जीक्यूट नहीं किया अभी हो जाएगा
कि इधर देखो जैसे एग्जीक्यूट किया तो इधर का जो सेल में ये सेल है इसको सेल बोलते हैं। ये पूरा ये जो एक पूरा उस सेल का पहले अगर एग्जीक्यूट हो गया कि एक्स वाई जेड को 9 ये कर दिया तो प्रिंट हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन ये कैलकुलेटर जैसे काम कर सकते हो। ए इक्वल टू बी इक्वल टू 4 इधर इनपुट भी दे सकते हो। प्रिंट ए प्लस बी ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए डॉट बी तो सिंपल हर एक को वो करते रहेगा तो 4 + 3 7 4 3 - 4 - 1 3 + 4 7 3 - 4 3 into 4 12 3/4.75 3 to the power 4 3 into 3 into 3 into 3 which is 81 3 divided by 4 मतलब फैक्टोरियल जीरो हो जाता है कि 0.75 निकाल के जीरो डाल देता और ये परसेंटेज भी मतलब 3 / 4 का रिमाइंडर कितना होता है 3 हो जाता है कि 4 0 का 3 तो टेक्निकली कि 4 1 ज़्यादा होता नहीं है तो बेसिकली 3 दे देगा और 100% 2 तो मतलब कितना 100% 2 इज 2 कंप्लीट डिविजिबल कर देता ना तो 250 100 तो एक बच जाता है तो एक इसलिए रिमाइंडर में तो 5 / 2 / 3 अगेन 1.1 दे देगा और ये 1 दे देगा और ये 5 / 3 1.6 ये 0.6 ऊपर नीचे ऊपर हट गया बट इधर अब 3 डबल इक्वल टू 4 आप बोल रहे हो ठीक है सर क्या 3 डबल इक्वल टू 4 अब इज ए इक्वल टू बी इज ए इक्वल टू बी यस नो राइट 3 इज नॉट इक्वल टू 4 तो ये फॉल्स प्रिंट होगा ऊपर ए नॉट इक्वल टू बी यस ट्रू 3 इज नॉट इक्वल टू 4 ना तो ट्रू होगा ए ग्रेटर देन बी 3 ग्रेटर देन 4 नहीं है तो फॉल्स होगा ए लेस देन 4 है 3 लेस देन 4 है मतलब तो ट्रू हो गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है वो भी फॉल्स होगा बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इट इज लेस देन इक्वल तो दैट्स ट्रू कॉमन मिस्टेक ए इक्वल टू बी सेव वैल्यू इन वेरिएबल बी तो ये समझ जाओ आपको ए तो बी का वैल्यू ए कोसाइन हो गया इधर ए का वैल्यू बी कोसाइन हो गया फिर लेफ्ट साइड हमारा वेरिएबल रहता है राइट साइड उसका वैल्यू होता है ए डबल इक्वल टू बी है अगर दोनों इक्वल है ना बिकॉज हमने एक दूसरे वाले एक दूसरे को इक्वल कर दिया ठीक है तो ये ट्रू हो जाएगा समझ गया और अगर मैंने ए भी निकाला है तो मैंने ऐसे किया होता और ये एग्जीक्यूट किया होता तो भी ट्रू होता क्योंकि आपने ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट किया ए इक्वल टू बी और बी को बट अगर मैं लिखूं a is equal to 1 right right and b equal to 1 let's see if it works mostly work ही करना चाहिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पेन तो
तो है ना, तो सिंपल है ये तो। अगर ये बी के इक्वल है, अभी 3 4 के इक्वल है, तो नहीं है पॉसिबल। तो एल्स वाला प्रिंट करेगा वो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड इनसाइड एल्स वो प्रिंट कर दिया। एंड ये तो नॉर्मल डिफॉल्ट है, ये तो प्रिंट ही कर रहा है। मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन अगेन, ए इज इक्वल टू, इधर तो कुछ इंडेंटेशन है नहीं, बट इधर इधर इंडेंटेशन नहीं देता एरर देगा, बिकॉज ये इंडेंट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम, ये जो इसके अंदर आने के लिए एक इंडेंट है, नहीं तो ये इसके साथ नहीं कंसिडर करें, ये प्रॉब्लम कर सकता है। नहीं, नॉर्मली अगर आपने सिंपल ये भी किया ना, एंटर भी मारा था, तो भी वो खुद इंडेंट करेगा, ये मैंने बोला। नाउ ए इज इक्वल टू 5, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट ए। वो आप कितना भी फास्ट से डालो, ये इसके अंदर ही कंसिडर करेगा, बिकॉज वो उसके आगे सिंपल, तो प्रिंट करेगी। हाँ। Oh, oh my God. Uh, let's do this, do this, do this. Let's do this, do.
Okay. If A equal to 5 and if A is greater than 0, print A is positive. Print inside if, outside if. So this is this indentation. That is, so it will print inside if there is no proper indentation. Is there should be 4 level indentation. Let's see if there's a indentation. And this will be print. Yeah. This is inside this. This is outside this. Now, note if can be used without else. So as you see, if O here is given but else is not given, then if and if else A is equal to 5, if A is equal to 1, and if A is equal to 2, and if A equal to 3, and if A equal to 4, and if A equal to 5, print greater than 5. Let's see, if A is greater than B, so 3 is greater than 4, not possible. So it will print A is equal to B, no, else A is less than B, this will print. See, print 25% 2. Odd number will give remainder 1 when percentage 2 because 25 divided by 2 is anything odd. So any odd number can be written as 2n plus 1. Right? In maths we have learned. And any even number can be written as 2n. So technically 25 is 2n plus 1. So there would always be 1 as a remainder. Because 2 would be n times. And there would be 1 and 0. 24 12 are 25 12 plus 1. 12 into 2 which is 24 plus 1 is 25. And print 5 is greater than 2, which is true. 4 greater than 4, false. Type 5 greater than 0, because it is true, it is a boolean data. A bool minus 6. Anything other than 0, right? Anything other than 0 is a true value. So A would be true. So print A would be true. And A question mark, print type bool A, this would be, then I think it might give you an error, I'm not sure. No, it will print true. Anything other than 0, I think it will print true. So, okay. Find if a number is even or odd. A is 45. If A percentage 2 is double equal to 0. So now 45 is 2n plus 1. So definitely it will have a remainder which is not equal to 0. Therefore, else value will be given if the value stored in variable A is odd. So we have to find odd variables. Number. Integer, input, enter a number, print number. This is an input taken out from the user itself. When we print it, it will ask for me for a number. So here I'll put number, suppose 1. Right? So print number 1, number plus 3, which is 4, number 1. Now this is again until 13 or 14, say 14. Then 15. This will give you 14, number 1, and 14 plus 15 is 29. Take a input will take a number, and it will, if it is not an integer, right, it will give an error. Let's look at that also. So if I put in A, then this will give an error because this I wanted integer out, which is when but if I just put input, then it would have taken A, but then, and if I would have actually done that, then it would have added to 3. And what I'm trying to say is, but if I've done this, right, what if I would have done this? What will happen is, it will take A, it will print A, but it will not print A plus 3 because one is a string and one is 3. It can only concatenate string, not int into string. So if I would have taken A plus string 3, right, then this would have been possible. Let's do that also. So A hai A3, so A plus 3. It will be put next to it. Right? Here 22 plus 2 as strings would be 22. As the only one 2 plus 2 would be 22 rather than 4.
enter a number. Again, I'll put, if I put something like S, this will give an error because it's a, what is a string data type, not a, this, what is it, a number data type. Range 10, uh, let's print that. For I in range 10, let's see what happens here. So 0 says to start and it will enter line because the 10th is the last number, to not print 10. Always go from 0 to 9. So what if I would return again hello? It will print 0, 1, 2, 3, 4, 5 times, and it will print hello, and then it will print hi. Or no, sorry, it will print hello, hi. Because both are indented into the for loop, right? So we printed one after the other. But what if I have just done this? Like there's no indentation in hi. So what would have printed was it would have printed hello 5 times and then hi in the end one time. See, so it's not indented into the for loop. Now name is equal to good morning. Okay, name is equal to good morning. So vowels are A, E, I, O, U. For I in the name, to I in name, if I not in vowel, print I. So what it will do is, it will just print the consonant because A, I, O are the vowels, so it's not in vowels. So it will print G, D, M, R, N, N, G. G, D, M, R, N, N, G. G, D, M, R, N, N, G. See. And the space is also not a consonant. Suppose if I would have done this, I would have put an A over here, then would have put because A is also a consonant. So the space is not a vowel, right? It is not there. But suppose, let's look at this also. This is also very interesting. So if there was a space here, but if you would have put also a space over here. So I'm just putting space inside a string. Understand that? Now will it print? See, it will remove that space also. Because that is also part of the list. It's interesting thing to understand. So a space could be put as a list or digits. For number and digits, print number. So it will just print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one after the other, per each. Like it will print 1, then 2, then 3. Like this it will print. That's a formula for you. Even if it was a list, it would have printed like keyword enumerate finding position or index or ID for data point of connection. Python has 0 means position start on 0. So there are digits 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. For I in enumerate digits means collection of alphabets, elements, data. So this is that travel, iterate and give index position and position. So like it will give 0, index, 1, 2, 1, position, 2. Like that, because 0 pair that is 1, 1 pair that is 2. Like that. Wouldn't like this. But if it I would have printed properly, like for index comma value in enumerate digits, it will print index comma value. For anything, I think it will print. Let's see if I comma j will work here. My solution of I comma j will work here. The index and value are just variables or temporary variables. I think it should. So wait, I'll just show you what happens normally index comma value. But this happens. Wait, what? Yeah, this happens. So 0 and 1. So this जो comma ये सब नहीं रहता है because they're putting as index comma ऐसे लिखना चाहिए. But here they are actually just iterating it from there. And here they are removing this. But if I would have just put I comma j also don't have work because it's just variables. I comma. This is normally how we put it. I comma j. Like in matrix and all we use I comma j, right? For rows we will I j. That is the reason I prefer I comma j. See here also it would still print because it's just variables. Enumerate is just a way to travel iterate using index comma position. It will give both. Simple as that. Let's go ahead. Then alphabets for index value and enumerate alphabets, travel iterate. Again, the same thing. It's just if you use 0, A, 1, B, like that.
But if it are just put in like this for I in enumerate or index, even in index, print index, it would have printed like this only, but only with a like this. As you see, over here. See. Now alphabet A B C D E F G H I. Uh, uh, for index form, I will enumerate alphabets. Okay, so if index is 5, print index. It will only print 0, 1, 2, 3, 4, 5. F, 5F it will print. It is only if index is 5 you have to print that. Other than for if it was written, okay, let's look at this. This is also kind of fun to do. So other than 5, fifth value, everything else it will print F in the chat. That's fun. Okay. So let's see as you see 0, 1, 2, 3, 4, even for 5 because for loop mein first it will print this, then if because it's also printing this. But what if I say, okay, let's look at this. This is also okay. So better way to phrase this, the way I wanted to do it was else. So else means anything other than 5, it will print this. So now it will do it properly. So 0, 1, 2, 3, 4, and 5 पे 5, 6, 7, 8. F in the chat, F in the chat. So for A, B, C, D, E तक F in the chat. F को 5F लिख रहा है. This fifth position में F है. G, H for enumerator लिख रहा है ना. It's kind of cool, right? Our name is Advaith, control 0. For I name मतलब A, B, V, I, T, to iterate each of them. If control is 4, print control command. तो सिर्फ कौन सा करेगा? 0 is A, D, 2, 3, V, 4 is 3 is A, and I is 4. So I 4. 4 I करेगा and control plus 1. So why this control plus 1 is important is simply because आपने एक वेरिएबल 0 पे डाला है. अगर ये नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेंगे बिकॉज फॉर ईच पहले फॉर पे जाएगा राइट एंड फिर वो इफ स्टेटमेंट में जाएगा इफ वो 0 पे है तो 0 इज ए तो प्रिंट नहीं करेगा और उसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा 1 पे तो डालना पड़ेगा नहीं तो एक 0 पे ही देखते रहेगा फिर वो कभी प्रिंट ही नहीं करेगा नाउ इफ आई वुड हैव पुट suppose if I would have not put this statement it would have never printed only क्योंकि वो बढ़ा रहा ही नहीं है ना कंट्रोल को जब तक वो 4 पे नहीं आता है ये कंट्रोल तब तक काम ही नहीं करेगा तो if I would have print this would have not worked but now because if I have done this it will work because it will just keep on this. So what will happen is I'll show you control plus 1 पे वो बार बार बढ़ाते जाएगा कंट्रोल को CTR को बढ़ेगा. So that's also variable. Now data storage. This is the most basic form of data storage you learn. तो जो read write फिर हम लोग text files में data store करते हैं JSON files में फिर NumPy में arrays में सब करते हैं उसका सब basis ये है जो हम पढ़ेंगे अभी. It is list, set, queue, dictionary and tuple. So type 1. So let's look at this variable to store information at one time. So either एक variable ऐसा है. Data structure to multiple information at one time. List which is most common, set, queue, and dictionary which is most common, and tuples. This is type 1, so this is basically it will give you integer in type int. This will give you float. It's decimal. For names, this is a list that we have defined. Ravi, Raju, Sham, Rao. Within the square brackets and separated with comma, print names.
इट विल गिव यू द एंटायर नेम। तो पहले तो ये पूरा नेम प्रिंट करेगा, फिर टाइप नेम मतलब ये लिस्ट प्रिंट करेगा कि ये लिस्ट है। फॉर आई नेम्स आई टेड ट्रू लिस्ट प्रिंट है। तो पहले रवि फिर राजू, ऐसे एक के नीचे एक, जैसे हम लोग इधर ऊपर कर देते, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे प्रिंट करते रहेगा। और आई इन दिस डिजिट्स करता था 1 2 3 इसमें क्या कर रहा है लिस्ट का। इसमें टेक्निकली क्या समझ रहे हो कि जो स्ट्रिंग में होता है, तो स्ट्रिंग में कैसा है, so this A B C D F G H वो एक ही नीचे प्रिंट होता है। और दिस द लिस्ट के लिए जो ईच एलिमेंट है वो RAVI नहीं है या RAJU नहीं है, वो रवि एक एलिमेंट है, राजू एक एलिमेंट है, श्याम एक एलिमेंट है, राम एक एलिमेंट। तो वो एक के नीचे एक प्रिंट होगा। और आई एन्यूमरेट नेम मतलब 0 रवि, 1 राजू, 2 श्याम, राम। तो ऐसे प्रिंट होगा। तो पहले उसका ऐसे सेट लिस्ट ऐसे ही प्रिंट होगा। तो इधर जैसे लिस्ट लिस्ट के जैसे प्रिंट होगा। उसका क्लास पूछा तो लिस्ट आया। फिर एक के नीचे एक आइटरेट कर गया, फिर उसके इंडेक्स के साथ आया कि 0 पे रवि है, 1 पे राजू है, ये शान। रूल नंबर अगेन दिस इज जस्ट रोल नंबर इज जस्ट बेस डिफरेंट लिस्ट। अब ये इधर वापस प्रिंट रोल नंबर्स किया तो जो जस्ट प्रिंट द लिस्ट एज एनी काइंड ऑफ कुछ भी वेरिएबल, इधर नंबर्स है, इंटीजर्स डाल सकते हो, डेसिमल नंबर्स, स्ट्रिंग्स एक साथ डाल सकते हो, बट वो प्रिंट हो जाएगा। देखो, पहले तो ये पूरा प्रिंट किया, ठीक है इधर। फिर उसका क्लास पूछा, प्रिंट टाइप रोल मतलब टाइप इज द क्लास, क्लास इधर क्या लिस्ट। फिर आई रोल नंबर प्रिंट आए, तो फिर एक के नीचे प्रिंट कर देगा ये 1.33 तक, 1.33 इज द लास्ट। देन जब पूछा इन्यूमरेट, तो वो 0th पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, 7th पोजीशन पे शाम है, 8th पोजीशन पे राम है। क्योंकि 0 से चालू होता है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, 7 पे शाम है, 8 पे राम है। और रोल नंबर्स नाउ लेंथ ऑफ रोल नंबर, सो बिकॉज़ द रोल नंबर ऑलरेडी डिफाइंड, तो अभी प्रिंट हो सकता है, बट अगर डिफाइन नहीं करते तो शायद नहीं होगा। तो इधर लेंथ कितना है, 0 2 कुछ तो है। तो अगर मैं इधर करूंगा तो ये 12 आता है, 12 एलिमेंट्स है ये लिस्ट में, एक दो इंडिविजुअली ऐसे गिन गिन के, कॉमा के बाद जो भी है वो एक एक एलिमेंट है। तो मुझे में भी इसके अगर वापस ये चार देंगे, तो इसका चार है ना। नेम राम, लास्ट नेम कुमार, ये कॉन्कैटिनेटिंग ऑपरेटर। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, ये एडिशन है। राम और कुमार को एक साथ जोड़ देगा और वो देगा। और अगर बीच में स्पेस भी डालना है, ये राम कुमार एक साथ आ जाएगा, ये इसमें राम कुमार के साथ, इधर एक राम और फिर एक स्पेस और फिर कुमार, फिर राम +3, उसका मतलब ये काम नहीं करेगा, ये एरर देगा लास्ट वाला। देखो राम आ गया, राम कुमार, राम स्पेस कुमार, वाला नहीं काम करे। बट अगर मैंने ये फिर आगे दिया रहेगा मल्टीपल लेटर, बट जो भी है मतलब अगर मैं +3 तो कर ही सकता हूँ, अगर मतलब स्ट्रिंग है तो वो तो कर ही सकता हूँ कि राम +3 आ जाएगा, राम और 3 एक साथ आ जाएगा। बट अगर मैंने *3 कर दिया तो क्या होगा, मतलब इंटू नॉर्मल जो 3 होता है उसके अंदर क्या, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप देखो कुछ समझेगा। वो 3 बार एक के बाद एक प्रिंट कर देगा, राम राम राम, 3 बार प्रिंट होगा। तो 100 बार भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करना है तो देख सकते हैं, समझने का प्रिंट कर सकते हैं 100 बार। अब राम 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 करके प्रिंट होगा। अब A = 3, प्रिंट फ्लोट ए। फिर क्या कर दिया, 3 को 3.0 कर दिया, देखो। फिर डेसिमल नंबर इंट है तो 3 आएगा, स्ट्रिंग है तो भी 3 आएगा। अब स्ट्रिंग ए तो कैसे, मतलब स्ट्रिंग ए बोले तो 3 को वो इसमें डालते हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है कि जब A = 3 आपने डिफाइन किया तो वो इंटीजर है, सबको मालूम, राइट। या होल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर से वो इंटीजर का इंटीजर फॉर्मेट है। बट अगर मैंने बोला कि इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो str a डाल दिया, तो ये जो एक्स, ये हम लोगों ने खुद से किया है। तो एक्सप्लिसिटली मतलब हमने खुद से डाला, रादर देन वो पाइथन खुद डिफाइन करने के बाद स्ट्रिंग है वो 3 प्रिंट करेगा। फिर दिखा रहे कि कैसे दिखना चाहिए, ये एक्चुअली प्रिंट करना पड़ता है प्रॉपर। इनपुट एंटर योर नेम, नंबर इनपुट एंटर योर नेम, तो नंबर ऐसे भी कर सकते हैं या इंट इधर भी डाल सकते हैं, इनपुट के पहले ऐसे भी डाल सकते हैं, या ऐसे जैसे वो लोगों ने डाला है, या तो ऐसे डाल सकते हैं या तो अलग से भी डाल सकते हैं, कि पहले इनपुट ले लिया फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब नंबर में कन्वर्ट कर दिया।
बट अगर वो जो आपने स्ट्रिंग में डाला वो भी एक नंबर है तो ही वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, बट इफ इट इज नॉट अ नंबर, अगर मैंने शाम, बीश जो भी डाल दिया तो वो नंबर में एरर दे देगा। जैसे अगर मैंने ए दे दिया तो एरर दे देगा, बिकॉज वो इंटीजर नहीं है ना, वो ये है। बट अगर मैंने यही सेम जगह वन डाल दिया तो वो प्रिंट करेगा, भले वो वन स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि वो वन एज अ नंबर भी एक नंबर है ना वर्ट करके। नंबर वन, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट एंटर, फिर वो एडिशन कर सकता है। और फिर ये बेस्ट है, इन नंबर वन इन नंबर टू को एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि इधर अलग से हम ले रहे हैं ना। तो इसका मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। इसका ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर मैंने इधर डाला ए, बी और आई एस एच, अभी तो प्रिंट कर देखो, बट ए बी और आई एस एच आर स्ट्रिंग्स, और उसका कोई नंबर नहीं, मतलब अगर मैंने वन और टू डालता तो 12 डाल दे, और इधर भी 12 दे देगा। और इधर क्योंकि इधर अभी ए भी आया से सब स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो वो इंट में कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। बट अगर वो नंबर है, स्ट्रिंग दे देते कि वन स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में, तो उसको वन को वन में कन्वर्ट करेगा जो नंबर है, टू को टू को, तो उसको ऐड कर देगा। अब इसका मस्त बात क्या होता है, इसमें दोनों आ जाएंगे। तो टू प्लस टू आपको देखना है, एक साथ देखना है, टू है तो 22 भी प्रिंट किया, क्योंकि टू और टू एज स्ट्रिंग्स भी डाला है, नंबर वन के बाजू में नंबर टू, और दोनों को इंटीजर में जब कन्वर्ट किया जाए तो उसका टू प्लस टू हो गया, वो फोर हो गया। जब इधर ये कॉन्कैटिनेशन है, इधर प्लस वाला, क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग्स है, देखो ये इसमें है ना, कोलन में, तो उसके से बाजू में हो गया। बट अगर आप सिर्फ इंटीजर में इसको पहले कन्वर्ट कर दिया तो उसको एडिशन कर सकते हैं, नंबर वन प्लस नंबर टू, 12, टू प्लस टू फोर। अभी इंडिविजुअली ये इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। इंडेक्सिंग मतलब ये जीरो पोजीशन पे एन है ना, तो ये एन प्रिंट करेगा, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट और उसके नंबर पे देते हैं इसको। और भी थोड़ा सा, और ये लिस्ट में मैंने बोला कि ये जो राम होता है वही वो जीरो एलिमेंट होता है, क्योंकि वो पूरा इसको एक एलिमेंट ले लेता है। ये लिस्ट एक खुद का एक डेटा टाइप है ना। वो राम का अगर मुझे आर लेना है तो उसका भी एक वे होता है, वो आगे बताएंगे इसमें। ओके, ठीक, फिर इस पे चल रहा हूँ। फिर ये खत्म होने के बाद डे टू जल्दी करूँगा, डे थ्री फिर डाउट्स आएंगे। फिर ये जो तीनों है ना, वो काइंड ऑफ उसका साथ में मिला दिया, वो करे नहीं करे भी चलेगा, और वो देख लेंगे, उसके क्वेश्चन थोड़े बहुत दिए है, उसके आंसर समझ लेंगे, जो मैंने अब तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे इसके आंसर्स और क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आंसर है। फिर रीड राइट आएगा, रीड राइट अलग से हम करेंगे, जेसन करेंगे। 4 बजे तो शायद 4-5 बजे तो हो जाएगा, शाम तो एटलीस्ट ट्राई करूंगा होने के लिए। उससे क्या होगा कि, उससे क्या होगा, पढ़ाई तो होती रहेगी, बट अपने नेम्स नेम माइनस वन। इधर नेम माइनस वन का मतलब है लास्ट पोजीशन, तो इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। ये जो नेगेटिव है ना, तो बेसिकली माइनस वन का मतलब क्या है, गोपाल प्रिंट करेगा, क्योंकि वो लास्ट वाला है। माइनस टू मतलब शाम, और माइनस थ्री मतलब राम। और लेन नेम माइनस वन मतलब, लेन क्या है, नेम का तीन है, तीन माइनस वन टू, तो जीरो और वन, जीरो और वन प्रिंट करेगा। नहीं है जी, तो पूरा प्रिंट कर देगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस वन का मतलब क्या है, ये इसका इंडेक्स माइनस वन होता है, क्योंकि अगर आप उल्टा होगा ना तो इधर से स्टार्ट होता है नेगेटिव, उल्टा तो नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री। और लेंथ नेम माइनस वन, लेंथ कितना, तीन है, तीन माइनस वन मतलब टू। अब इसका क्या इंडेक्सिंग होता है, जीरो वन टू, तो टू पे क्या गोपाल, तो वापस ये गोपाल ही प्रिंट हो रहा है, समझ रहे हैं। माइनस टू पे वापस शाम होगा, और फिर माइनस थ्री पे राम। और माइनस फोर होगा ही नहीं, बट एरर देगा नहीं, एरर बोलता बट देता नहीं, हाँ सॉरी एरर देगा, अगर मैं इसमें अच्छे कमेंट है ना, अगर ये मैं इसमें देखूंगा तो एरर आएगा कि ये माइनस वन गोपाल है, माइनस टू श्याम है, माइनस थ्री राम है, माइनस फोर क्या है, उसके पीछे तो कुछ है नहीं, इसीलिए वो देगा ही नहीं। नेम इज माइनस वन, अगेन वी देगा, फिर माइनस टू पे ए देगा, इस पे ए एन देगा, वो माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स तक देगा। माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन नहीं देगा, वो एरर देगा, वन, उल्टा प्रिंट कर सकते हैं। नॉट डॉट अपर मतलब वो इस पे प्रिंट होगा।
प्रणव को बड़ा कर देगा तीनों को। लोअर में मतलब ये छोटा कर देगा। डॉट लोअर ऐसे लिखना होता है, नेम डॉट लोअर। ओके, नाउ स्लाइसिंग पे आते हैं। लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ना, ये तो प्रॉब्लम। टाइम कम पर मोस्टली अच्छा खासा पोर्शन में नहीं, मोस्टली जैसा सिर्फ सब टॉपिक अच्छे खासे हर एक जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक जो मैंने अभी तो पढ़ा ना थियोरी में वही था, बट वही सब टॉपिक बहुत सारे हैं। ना स्लाइसिंग, दस नेम्स है 0 to 1। तो ये 0 पे क्या है, राम है। 1 लास्ट वाला हम लोग लेते नहीं है, तो सिर्फ राम पे प्रिंट होगा। 0 2 पे 0 और 1 प्रिंट होगा। 0 3 पे 0 1 2 प्रिंट होगा, तो गोपाल का प्रिंट होगा। 0 5 में एरर तो नहीं होगा, सिर्फ राम श्याम गोपाल होगा, उसके आगे नहीं होगा। तो इधर राम हो गया 0 1 पे, क्योंकि सिर्फ 0 वाला रहेगा, क्योंकि 1 वाला वो लास्ट वाला लेते नहीं। स्टॉप स्टार्ट एंड वैल्यू मैंने रेंज में दिखा था ना, इधर हो। हाँ, स्टार्ट 0 एंड गो, इट विल नॉट बट नॉट इंक्लूड द लास्ट वैल्यू 10। तो इधर 10 जो है ये नहीं लेगा। 2 मतलब एक ये होता है, 2 का मतलब स्टेप वैल्यू। तो अगर 0 10 2 लिया, तो उसका ना 0 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 4 6, तो दो दो के वैल्यू में बढ़ाते हैं। 3 प्रिंट किया तो 0 3 6 9 ऐसे प्रिंट करेंगे। ओके। हाँ, इधर तो क्या है, ये 12 डिजिट्स का है नहीं, तो क्या फर्क। अब इधर क्या दो दो के इंटरवल में प्रिंट करे, देखो दो दिया ना स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू इसको बोलते हैं। इसको ये 0 इज स्टार्ट वैल्यू ओवर हियर। तो पहला जो सेमीकोलन के पहले होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट वैल्यू होता है, ये एंड वैल्यू। तो ये लास्ट वैल्यू तो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट। तो उसका स्टॉप वैल्यू एक्चुअली 80 है ना, कि n-1 पे स्टॉप हो जाता है। 1 4 7 9 0 2 9 3, तीन तीन के इंटरवल में 1 के बाद 4 लेगा, कि तीसरे नंबर पे 4 के बाद 7 लेगा, ये उसके तीसरे नंबर पे 5 6 7। फिर 8 9 नहीं है, तो उसके बाद 10 होता तो शायद लेते था। अगर इधर 10 होता था, तो इधर 1 4 7 के बदले ये भी ले लेता था, और वो ये अभी 1 0 प्रिंट होगा। तो फॉर आई एंड एन 0 to 10, इधर 0 1 2 3 4 9 तक प्रिंट होगा, बिकॉज ये 10 लेता नहीं है, लास्ट वैल्यू नहीं लेता। और 1 के तो इधर 0 2 4 6 8 ऐसा प्रिंट होगा। 10 नहीं है, क्योंकि 10 वाला लेते नहीं ना। 0 to 2। अब इसमें क्या है, राम और श्याम प्रिंट होगा। 0 और 1 ही प्रिंट होगा, 2 लेते नहीं है। ये इंडेक्स में हर बार कोई भी लिस्ट हो, या इधर रेंज हो, या स्ट्रिंग हो, या कुछ भी हो, लास्ट वाला लेते नहीं है। और स्टेप वैल्यू लिखे तो वो भी हो जाता। अगर मैं इधर भी स्टेप वैल्यू लिखा रहता तो शायद हो जाता। ओके। नाउ नेम 0 to 3। 0 to 1 है राम श्याम, इधर वापस ये सब प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 1 2 है। अगर ये 4 भी डालते तो प्रिंट कर देता, क्योंकि वो लिस्ट में फर्क नहीं पड़ता उसको, वो एरर नहीं देगा। लिस्ट ऑफ नंबर्स। नाउ ये आपको मालूम है, कुछ तो है ये तो। 5 to 8, 5 6 7 8, which is 36 49 64 81। you want to do। तो 5 to 9 देना पड़ेगा, क्योंकि 9th वाला लेगा नहीं, 8th वाले तक लेगा। अगर 5 to 8 दे तो 5 6 7 ही प्रिंट होता था, 5th वैल्यू 6th वैल्यू और 7th वैल्यू जो है 36 49 64 81 प्रिंट नहीं होता था, अगर मैंने 5 to 8 लिया रहता तो। और 9th वाला तक लिया, इसलिए 8 तक प्रिंट होगा सिंपल। तो which is 36 49 81। इधर देख रहा हूँ मैं, दिस इज टू टाइम कंज्यूमिंग। नो, ऐसे ही करके अच्छे से समझ लेंगे ना, तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है। लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये वापस रिड्यूसिबल लिस्ट, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है।
फिफ्थ एलिमेंट तो फिफ्थ इंडेक्स पे प्रिंट जो है, अगर उसको असाइन भी कर सकते हैं, लिस्ट बोले ना अपेंडिंग, मतलब उसको म्यूटेबल डेटा है वो तो चेंज कर सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे अगर 800 डालना है, तो क्या होगा, पहले तो वो जो फिफ्थ नंबर पे वो प्रिंट करेगा, इधर है 36, और जब एथ एलिमेंट न्यू फिफ्थ एलिमेंट है अभी 8, तो वो 800 दे रहा है, और अभी ये देखो फिफ्थ पे 800 आ रहा है। ये लग रहा है सिक्स है, बट क्योंकि ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, जीरो से चालू होता है, तो 0 1 2 3 4, और ये फिफ्थ, और ये लिस्ट ऑफ नंबर्स रखना ऑलमोस्ट शाम है। तो जब लिस्ट पे भी ये काम करता है, 2 बार प्रिंट होता है, रोम श्याम राम श्याम। नीलम को 5 बार प्रिंट कर दिया। टेक्निकली ये सब फिर वही है, ये उल्टा प्रिंट कर दिया। -3 से अगर स्टार्ट किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, जो भी -1 पे, सपोज ये -1 पे था, -2 -3 ऐसे स्टार्ट होता है। इधर लिस्ट आ गया खत्म। अब ये सब वही था। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, वाइल लूप, प्रॉपर लूप्स पे आ गए। और हाँ, अगर आपको ये प्रिंट करना ना, मतलब सिराजी राहुल है ये, तो सिराजी राहुल तो प्रिंट होगा, बट उसका अगर 0 0 तो ये 2 बार लेना पड़ता है, एक के बाजू एक, स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 बार। ये सेट्स के लिए, सेट्स में होते नहीं है, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। मल्टी लिस्ट बोलते हैं जब तो दो दो बार ब्रैकेट लेते हैं और दो दो लिस्ट लेते हैं इसका। तो इस पे जब 0 देंगे तो ये पूरा लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगा। राम श्याम राजू, ये पहला, इस पे 0 देना है, ये पूरा है। और ये पूरा एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसमें इसके लिए ये 0। बट अगर मैं 1 डालूं तो ये वाला लिस्ट प्रिंट होगा। अगर 0 0 डाला तो राम प्रिंट होगा, क्योंकि वो 0 जो ये वाला फर्स्ट लिस्ट है, उसका भी फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो ये 0 क्या होगा, 0। सिंपल, प्रिंटी, सिंपल। फिर सेट्स है, इधर आने वाला सेट्स इम्यूटेबल होता है, तो इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते, इसको बस थोड़ा लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे इधर किया है शहनाज वाला। अब वाइल लूप आता है। उसमें फाइनली आ गई फॉर एल्स के बाद। और हाँ, वाइल लूप कितना भाई है। और फिर डेफिनेशंस, फंक्शंस फंक्शन, वापस सेट्स इधर आया था। फिर क्यूज आते, क्यूज इधर पढ़ाया नहीं था, बट आते हैं। दिस कॉपरेशन एट, आई थिंक आई एम नॉट, मजा भी नहीं करा ये, फिर आई एम नॉट श्योर ये करने की जरूरत है। इसमें सिर्फ बहुत क्वेश्चन दिए हैं। मांगता तो देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, बट यार भी यू आर ऑन वाइल लूप्स ना, इधर से वाइल लूप वापस चालू होता है। मैं ही 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ये कितना काम जाना है इसमें। आई थिंक वही है कि एक बार ये हो गया, ये सबसे लेंदी पार्ट क्यों है, भले ही बहुत बेसिक है, बड़े लेंदी क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज बेसिक में बहुत पढ़ाए थे, और बहुत एग्जाम्पल दिए थे। अब क्या है, ये चीज देखो, जेसन और एच टी एम एल रीड राइट फाइल, ये जो अलग सिर्फ, ये देखो नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसके लिए सिर्फ 2 फाइल है, वो भी बड़े बड़े नहीं, जितने ही जितने हो इसके, एक इसके एक है। और फिर नंपाई का तो एक ही फाइल है। उसके बाद फिर पैराटास का भी एक दो दो तीन फाइल ही है, जो कोड वाले हैं। और उसका थ्योरी का तो एक ही फाइल है। मैटप्लॉटलिब का भी आते हैं, एक या 2 फाइल है कोड के, और एक फाइल थियोरी का भी शायद है भी नहीं, शायद बाद में। थियोरी उसका कोड ही है, ये मोस्टली कोड भी समझ आता है। अगर ये बहुत टाइम लग रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। फिर लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, तो वो इसे एक बार दिखा दूंगा, थोड़े बहुत ऐसे डिक्शनरी पे दिखा दूंगा अच्छे से।
और सीधा जाऊंगा इस पे, और इससे फिर इससे इसके क्वेश्चन टाइप देखेंगे, कैसे प्रिंट करना है, किसका कमेंट्स कैसे करना है, किसी टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इधर एक क्वेश्चन है, ये नंबर है, फ्लोट है, तो ये ऐसा वाला क्वेश्चन, डेटा टाइप्स, थोड़ा स्ट्रिंग थ्योरी, क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। किधर है, ठीक है, एंड में देते हैं। और बेसिक ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के आंसर दिए, and 2 पे भी ऐसे ही है पूरा, 3 पे भी है, तो फिर खत्म, फिर ये आ जाता है। मजाक भी नहीं कर रहा, ये अच्छी था, बॉर्डर भी की है, ये सब बकचोदी कर रहे थे। एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो रीड राइट फाइल है। और मैं सोचा था कि ये अच्छे से थोड़ा ठीक से करा लेता तो फिर एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। फिर ये रीड राइट और जेसन वाला थोड़ा इजी है, ये तो रिलेटिवली, बाकी तो हर चीज क्या है, मतलब इन टर्म्स की करने के लिए इजी है, पर समझने थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट करने के लिए एक्चुअली इजी है। तो ये सब मैं कह रही करने के लिए भी इजी है ये वाले तो, फर्स्ट वाले एक्चुअली करने के लिए इजी है, बट क्या बहुत ज्यादा है जो दिए मैम ने। स्टार्टिंग में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना था फूड, तो इसीलिए मैम ने बहुत दिए, तो फिर उसकी वजह से अभी हमको इतना पढ़ना पड़ रहा है। देखो कितना फाइल है, मतलब वो तो थियोरी तो पढ़ाया था, इसका फर्स्ट फाइल हम लोग कंप्लीट किया, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, फिर 7 फाइल है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सिर्फ 2 फाइल है, और थर्ड टॉपिक तो 1 फाइल, फोर्थ टॉपिक के लिए भी 2-3 ही फाइल है, और वो भी किसी सिमिलर टाइप के कोड है। इधर तो इतने मतलब एग्जाम्पल्स इतने ये भी है, अननेसेसरी है ये सभी। बेसिकली ये तो बस लिस्ट का ही, ये वाइल लूप है, आई 10 है, तो प्रिंट आई प्लस वन वो करते जाएगा 0 to 9। फिर ये स्टूडेंट क्लास है, प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट, ये सिर्फ 3 प्रिंट कर रहा है, 3 का लिस्ट है। आदित अनुजा, ये वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ स्टूडेंट, तो वाइल आई लेस देन 3, तो 0, 1 और 2 प्रिंट करेगा। और इसमें कैसे आई आई ऐड कर रहे हैं, आई प्लस वन भी कर रहे हैं ना, तो पहले 0 था तो 1 हो जाएगा, फिर 1 पे 2 हो जाएगा। तो आदित अनुजा हर एक वैल्यू ले लेगा वो, 0 पे आदित, 1 पे अनुजा, 2 पे सृष्टि। अब डिक्शनरी पे आता है। थोड़ा डिफिकल्ट क्यों करा दिया। हम्म, जैसे कैसे तो ये हो जाए, ये और पार्टनर्स आज में करना भाई, इसके बाद फिर देखते क्या करें। ठीक है, डिक्शनरी एक क्लास, ऐसे ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कुछ भी डाल सकता हूँ, इधर अंडरस्कोर सब डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाल सकते, डिक्शनरी भी डाल सकता हूँ, इज इक्वल टू, तो इधर क्या ये है की मतलब, इधर डिक्शनरी में था ना, एक ये होता है, कुछ तो वर्ड होता है और उसका एक डेफिनेशन होता है, उधर एक वर्ड है मतलब की है, और उसका वैल्यू होता है। तो इसको अगर डिक्शनरी फॉर्मेट में अगर आपको एक्चुअली दिखाना है सपोज, तो मैं सपोज मैं एग्जांपल दिखाता एक, मैं एक ये बनाता हूँ, डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ, प्रॉपर एक डिक्शनरी, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा समझ भी आएगा कि डिक्शनरी कैसे काम करती है। डिक्शनरी, ठीक है, और इसमें से सिंटैक्स कैसे होता है इसका, इक्वल टू, और फिर ये जो ये वाला है, ठीक है। ओके, सपोज मैंने डाला एप्पल, राइट, स्मॉल रेड फ्रूट, कॉमा, कॉमा ही होता है ना, हाँ, ऑरेंज, सिट्रिक फ्रूट, फिर क्या है, वाटरमेलन,
a, a big green red fruit with a lot of water. With a lot of water content. तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिए तीन फ्रूट्स। अब इसमें एंड में नहीं जाना होता ना। अगर मैंने पूछा, ठीक है, इसको थोड़ा एक प्रॉपर डिक्शनरी टाइप बनाते हैं, मतलब इंटरैक्टिव डिक्शनरी। ठीक है, इसमें तीन डेफिनेशन है, तीन मतलब अल्फाबेट्स, और उसके तीन अल्फाबेट मतलब तीन वर्ड्स और उसके तीन डेफिनेशन है। अगर मैंने अभी इसमें डाला थोड़ा सा लाइक इंटरैक्टिव डिक्शनरी बना, थोड़ा थोड़ा प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाता है। प्रिंट विच वर्ड टू वांट टू सर्च ऑन एप्पल टू और थ्री वाटरमेलन। ठीक है, केस स्विच। कैसे केस लिखते थे यार? छोड़ो, केस स्विच नहीं चाहिए। केस तो मैं भूल गया, स्विच केस कैसे लिखते थे। स्विच केस एनवायरनमेंट। एक बार ऐसा कभी भी इस वजह से देख लेना चाहिए। सो स्विच केस एनवायरनमेंट, स्विचर करके देते हैं क्या? मुझे तो जितना याद है केस लिखते थे। हाँ सॉरी, केस इसमें होता नहीं है ना, हाँ ठीक है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, के स्विच केस इज नॉट, आई थिंक इट्स नॉट, आई डोंट नो। छोड़ो, नहीं तो यही करना। के जीरो, छोड़ो भाई। फॉर आई इन, फॉर वाइल, नहीं तो वाइल आस्क इक्वल टू वाई इन नंबर, ऐसे लिखते हैं। 1 2 3, ठीक है। इफ नंबर, एक सेकंड, इफ नंबर इक्वल टू डबल इक्वल टू व्हाट, तो अगर इधर नंबर वन आ गया, प्रिंट डिक्शनरी
डिक्शनरी, तो इधर एप्पल करेगा। ठीक है, प्रिंट एप्पल। अब यही सेम चीज ऑरेंज और बनाना के लिए करते हैं। अरे यार, अरे यार, ये क्या कर दिया। ठीक है। हाँ, तो अगर मैंने इसको सी किया, एल, अरे इक्वल टू टू, प्रिंट ऑरेंज, दे दे। एल नंबर डबल इक्वल टू 3, प्रिंट वाटरमेलन डिक्शनरी वाटरमेलन। ठीक है। अब फिर वाइल लूप में ही पूछो, डू यू वांट टू गो अवे, उसके लिए ये आस्क इक्वल टू यू वांट टू गो अवे। ओके। तो ये प्रॉब्लम है। पर अगर मुझे मैंने कॉमा डाला, ये डाला, ठीक है, और फिर ये डाला, तो प्रॉब्लम है। और यस, नो, तो ये जब तक आस्क वाई है, अगर वाई वाई डाल देगा तो वापस पूछेगा ये। तो
if r double equal to n तो ब्रेक हो जाए। L then यहाँ का है ऑप्शन और वैसे ही ब्रेक हो जाएगा अगर कुछ ऑर्डर। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये, पहले इधर जाएगा, ए 1 2 3 पूछेगा, अगर ये पूछा तो ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। फॉर द कॉमा क्या फॉर्म है, 10th लाइन करेगा कंडक्ट। ओ इधर कॉमा, ओके सॉरी, इधर भी कॉमा और इधर भी कॉमा, क्योंकि वो टेक्निकली उसके बाद आ रहा है। ओके लगा। ओ इधर पहले डिफाइन करना होता है ना। पास पहले भी रखते हैं। नहीं, लेट्स ट्राई दिस। तो मैंने लिखा 1 नंबर इक्वल टू डिक्शनरी, तो ऊपर मैंने डिक्शनरी लिख दिया है। डिक्शनरी अभी से होगा, कुछ कुछ एरर्स ऐसे आते रहते हैं। तो 1 डाला, एप्पल अ स्मॉल रेड फ्रूट, इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन सीधा। ओ ओके, पर पहले तो पूछना तो चाहिए, पूछा ही नहीं। ओ ओके, आई थिंक मुझे समझ आ गया। ये हर एक को ना इसके अंदर डाल, अब ये पूरी चीज को वापस नहीं करेंगे और अब शायद चलेगा। बेसिकली हर एक के बाद अगर मेरा ये हो गया तो फिर ये पूछेगा आज। अब शायद काम करे, 1 पे जाए। अरे पर पहले पूछ तो ले, तूने पूछा है तो है नहीं, सीधा ब्रेक ही कर देता है। ओके आई थिंक मैं इसको, शिट, ओके कंट्रोल सर, मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूँ।
इनपुट में डालना। मैं वही सोचू कि क्यों ये पूछ रहा क्यों नहीं है। ओके, तो पहले भी वो ठीक ही था, तो मैं बाहर ही रखता था। इनपुट, अगर मैं बाहर ही रखता तो भी ठीक था। हाँ, अभी होगा, अभी होगा। मैं वही सोचू कि ये क्या प्रॉब्लम क्या कर। डू यू वांट टू गो अप है, अगर मैंने कुछ और भी डाला, इनकरेक्ट ऑप्शन करके बंद कर दिया, अगर ये मैंने वापस चलाया, ठीक है, टू डाला, ठीक है, और एन से अगर इधर वाई मैंने कैपिटल वाला डाला, क्यों, एल्स क्यों। ओके, तो अगर मैंने डाला एल इफ, एल इफ लेट्स ट्राई दिस, अच्छी ना। मुझे यही समझ नहीं आ रहा क्या करना। तो वाई डाला है, तो एल्स पे ही जा रहा। ओके, अगर मैंने डाला, ठीक है, एल्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू, अब शायद काम करे। बट इनकरेक्ट ऑप्शन, मैंने तो वाई डाला था। ब्रेक क्यों कर रहा भाई बंदा, तो गड़बड़ा। मैंने यस किया, अगर आस एन में तो ब्रेक करना चाहिए, अगर आस, एक सेकंड, ठीक तो है, अगर आस, ये पूरे को अगर मैंने इसमें डाल दिया, तो क्या होगा।
ओके, पर अगर मैंने डाला है तो आज ओके, अगर मैंने डाला आई थिंक ना, उधर गलती क्या हुई है। ओके, आई थिंक ये काम करेगा। अब काम कर रहा है देखो। अगर मैंने एज डाला तो ये बंद करता है, इनकरेक्ट ऑप्शन करता। अब समझा। माय गॉड, मैं मेहनत की एक डिक्शनरी बना रहे हैं। तो बट अब दिख रहा है अभी। तो अगर एक है तो ये लेफ्ट, नहीं तो दो। फिर यहाँ से पूछा अगर जाना आगे, अगर एन डाला तो ब्रेक करे, अगर वाई नहीं डाला, वाई के अलावा भी कुछ डाला तो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर वाई डाला, बिकॉज आस अगर वाई रहेगा तो ये चलते रहेगा, और मैंने ऊपर आस पहले ही वाई डाल दिया था, इसलिए पहला बार तो चल रहा था, एंट्री कंट्रोल है ना, एग्जिट कंट्रोल। तो पहले बार चला, दूसरा चला, फिर वो चलते रहे। Fine. So let's go ahead. बहुत बकचोदी करती है एक ही चीज पे। डिस्कार्ड हट। तो अभी अगर आपको ये भी मतलब म्यूटेबल वाला है तो ये आपको चेंज कर सकता हो कि जो 4 4 वाला है उस पर क्षितिज के बदले आपने हितेश डाल दिया तो भी प्रिंट हो जाएगा। देखो, आदित्य हायर है, ठीक है, पर वही है, ये तो दृष्टि को नहीं कर रहा। टेक्निकली तो ये भी प्रिंट होना चाहिए, कुछ और गड़बड़ है ये। ये इसमें हो रहा है, आई थिंक वो इंडेक्स केसेस प्रिंट अगर कर दिया तो फिर शायद होगा। हाँ, वो क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से। तो अगर मैंने इधर एक्चुअली, मुझे लग रहा है वो क्या कर रहा है पता है, 3 के अंदर अगर मैंने 4 डाल दिया तो 33 प्रिंट है। हम्म, ठीक है, जो भी है। अरे ये कूलर में आ रहा है ना, तो मतलब वो उधर। ठीक है। फॉर आई, तो ये कीज प्रिंट करेगा, तो कीज मतलब ये मिल रहे थे इन्फॉर्मेशन, आदित्य अनुजा वो लिखा था ना। चलिए शुरू करते हैं। आइटम्स प्रिंट करेगा। ये ट्रू या फॉल्स देगा इन मतलब मेंबरशिप, तो इसके अंदर है ना ये।
आदत नहीं है, छोटा आदत है, बड़ा आदत नहीं। रोहन भी आई थिंक नहीं है ना, तो फॉल्स प्रिंट करें। अगर फिर ये इन्यूमरेट वाला टाइप है कि आदत है अनुजा जाता, फिर इसके मतलब ये कीज है और ये इसके वैल्यूज। ओके, ये क्वेश्चन टाइप है। इस पे जाता है टेबल पे, बना रहा है। So let's do this. Next, we'll now only be communicating in English, not because we're two Desh blocked or nothing, but simply because it is more professional that. Yeah. So, so feeling very sleepy. Not more sleepy, it's more like too bored with this. Even though I had fun doing this dictionary, that dictionary thing. But yeah, well, let's try this. Now, what is this? It's a list comprehension Python. Even digits, I for I in digits. If I percentage 2. I know why it is I for I in digits. If I percentage 2 equal to 0. तो इवन डिजिट्स होगा, तो उसमें आ गया 2 4 6 8, इवन डिजिट्स पे प्रिंट करें 2 4 6 8। आई थिंक आई भी ऐसे ऐसे भी चलेगा। अब मैंने इसको ऐसे भी दिया ना, तो प्रिंट। ओके, आई थिंक इट इज अ सिंटैक्स लाइक दैट। ओके, ओके, वो लिस्ट जैसे प्रिंट कर रहा है सीधे। आई फॉर आई इन डिजिट इफ आई परसेंटेज टू इवन डिजिट, ये दूसरा वे है जिसको उसको थोड़ा बड़ा तरीके से लिखेगा। ठीक है, अगर पहले एक एम्प्टी लिस्ट इवन डिजिट डाला कि अगर आई परसेंटेज टू है उसको अपेंड कर दिया, मतलब एक एक करके डालते हैं, तो दोनों में वही हो रहा है। एक में डायरेक्ट ऐसे इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टाइप किया था, इसको नॉर्मल लूप से तो है, फॉर लूप से।
ओके, पिप इंस्टॉल स्टैटिस्टिक्स ये आपको कमांड में जाके करना होता है। नॉर्मली ये मेरे साथ इज ऑलरेडी डन, आई एम नॉट श्योर। हाँ, हो गया। स्टैटिस्टिक्स भी किया था। Yeah, I think it was already down. Mostly it is already downloaded stuff. Panda गाड़ा भी सब करके रखा है। पर ठीक है ना। I think what I'll do is continuation में करूंगा, मतलब इसको करने का, इसको पूरा करने का नंपाई तो फिर बैठ के थोड़ा पांडा सर्च आउट करो, फिर कल सुबह पांडास करूंगा, फिर मैटप्लॉटलिब और फिर वो क्वेश्चंस, और फिर जाने से पहले एक बार पी वाई क्यू देख लूंगा। वैसे करता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ये क्या है ये, इतना टाइम दे रहा है। हेलो है, एक सिर्फ हाउ टू डिफाइन अ, इधर मीन है, मीडियन है, मोड है, और मतलब बेसिक स्टफ। अभी इनबिल्ट टाइप के फंक्शंस होते हैं और खुद डिफाइन किए होते हैं। इनबिल्ट तो आपको मालूम है, जैसे प्रिंट एक इनबिल्ट है, स्टैटिस्टिक्स एक इनबिल्ट है, तो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। फंक्शन, सॉरी, हाँ, इनबिल्ट, हाँ, फंक्शंस या मॉड्यूल्स। हियर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि ये इधर है प्रिंट हेलो, तो इसमें हेलो प्रिंट करता है। तो जब आप उसको कॉल करते हैं तो वैसे लिखना होता है कि वापस इधर कॉल किया इधर नीचे, तो प्रिंट हो जाता है। अगर कॉल नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। ये बार बार भी हो सकता है। तो इधर डिफाइन हो गया, अभी वापस जब इसको यूज करेंगे इधर तो इधर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी डिफाइन किया और एग्जीक्यूट किया था। इधर डिफाइन हो गया कि ये प्रिंट टेस्ट हेलो टेस्ट है, तो जब कॉल किया तो हेलो टेस्ट प्रिंट हो गई। ओके, ये सेम चीज़ से एक आपको डेफिनेशन में लिखना था, डिफ और उसका नाम, और ऐसे एक ये डालना होता है। आप नॉर्मली इसमें ये भी डाल सकते हो कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो मैं एग्जांपल देता हूँ इस, इंस्टेड ये करने से अच्छा आप सीधा डाल दो, मतलब ऑपोजिट में निकल, रादर देन कॉलिंग इट लाइक दिस। आप, जो मैं बोल रहा था आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो इसमें डाल सकते हैं, जैसे इसमें अब ये तो एरर दे देगा क्योंकि ये जैसा कुछ है ही नहीं। बट अगर मैं ये देता प्रिंट, बेसिक जो हमने पढ़ा, अभी क्यों पढ़ते हैं, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डे क्यू, तो डे क्यू एक इंपोर्ट हो गया, ए बी सी, प्रो क्यू में डिपेंड कर रहा है, ए बी सी डी को पॉप लेफ्ट मतलब ए को पॉप करेगा, आई थिंक, या पॉप राइट बोले तो फिर वो राइट को, मतलब डी को पॉप करता था तो निकाल देता है वैसे। इसको वापस डाल सकते हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट चलता है, मतलब जो लास्ट है, तो अगर मैंने डी डाला है तो डी पहले फटेगा, भी पॉप होएगा। देखो ए बी सी, डी आ गया, डी निकल भी गया जैसे पॉप किया। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट मतलब जो पहला डाल लास्ट डालता है वही पहले निकलता है। स्टैक है ना, एक ही एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे बुक्स आप रखते हो, जैसे ये एक एक बुक, दूसरा बुक, तीसरा, तो जब पहला जब पॉप करेंगे तो तीसरा बुक पहले जो ऊपर से फिर लास्ट एंड फर्स्ट आप डिलीट फ्रूट्स, तो ये बंद निकल ही जाएगा। स्कोप, स्कोप इज ये जो एक फंक्शन डिफाइन करता है, राइट, तो अगर सपोज फंक्शन के बाहर मैंने कुछ डिफाइन करके रखा वेरिएबल जो इसमें यूज हो रहा है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, जो इसके अंदर भी यूज हो रहा है और किधर और भी यूज हो सकता है। अगर मैंने उसको एक वेरिएबल इसको इसके अंदर डिफाइन किया, जैसे राजू इसके अंदर डिफाइन किया फंक्शन, तो ये लोकल वेरिएबल है, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तभी ये काम करेगा। अगर मैंने अलग से राजू को कॉल करने की कोशिश किया तो होगा नहीं, आउटसाइड फंक्शन है।
Okay, I think we are done. कोई एक वे है लिखने का। एफ पहले लिखना होता है, फिर आप ऐसे अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया तो आप उस पूरे स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकते हो ऐसे, ऐसे फॉर्मेट में। फिर रिटर्न करने के लिए कि अगर सनी है तो ये सनी रिटर्न करेगा, राइट, वेदर टुमारो इज सनी। ये प्रेडिक्शन जो इधर से कॉल किया है, तो ये जो ये वेदर है, ये सनी है, इधर जाता है, ये इधर आता है, फिर ये इधर इधर जाता है, ये प्रेडिक्शन। तो इसे पूरा सा, चलो फिर अभी ट्रेस हैंडलिंग, इंपोर्ट ट्रेस बैक, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो ट्रेस में तो ट्राई और एक्सेप्ट होता है। तो अगर 3 बाय ए है, अगर सपोज मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर मैंने 1 डाला, एरर ऑकर और नो टेंशन, तो ये हर बार प्रिंट करेगा सिंपल। बट ये 3A1 ही डाला था, इसलिए इधर क्यों प्रॉब्लम हुआ, इज बिकॉज प्रिंट, तो ये काम कर रहा है, तो ये क्यों निकाल दिया, वो पूछ रहे हो तो फिर, और ये निकाल दे रहे, ये निकालने को हो गया, अगर वन डाला तो हो जाएगा। If any part of the code has done right etc. If all error occurs in try and execute except finally, okay। बट इसमें एरर क्या हो रहा है, ट्राई 3 बाय ए, अरे हाँ 3 बाय ए ना, इसमें कुछ आप प्रिंट विंट नहीं कर रहे ना, हमारा प्रिंट करते हो शायद। वही मैं सोचू क्या गलत हो रहा है। हाँ भी होगा ये, समझा, नहीं हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। भी सेट्स देखते हैं, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट लिख के और उसको ऐसे एक दो जो राउंड ब्रैकेट जैसे सेट डिफाइन होता है उसको ऐसे लिख, तो नेम्स को ऐसे सेट के अंदर इनक्लोज करते, तो अभी ये सेट हो गया। एनालिस पार्ट कर, सेट पार्ट कर, तो ये सब सिंपल इंटरसेक्शन दिखाएगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो राजू राजू है, दोनों में राम राम ओम है, राजू राजू राम, तो ये रोहित और किरण के साथ सब ओम राजू, और वो बार बार नहीं करेगा, एक बार जो इंटरेक्ट करेगा LMNO PQR ना, तो वो इवन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो सेट डिफरेंस है, तो रोहित और किरण प्रिंट करेगा, रोहित किरण भी है क्या, सॉरी एनएमएस माइनस पार्ट करना, तो जो एनएमएस में है बट किरण में पार्ट कर में नहीं है, तो रोहित एनएमएस में है बट पार्ट कर में नहीं है, उल्टा करेंगे तो किरण आ जाता था। इधर इन भवन और यूनियन ऑपरेशन मतलब ये पूरा ही दे देगा, किरण उमराज और सब, और रिपीटेशन को एक ही बार लेता। ये है वो जो मैंने बोला था ना, बिट वाइज ऑपरेटर्स, एंड और जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ठीक है, जिप करता है क्या जिप क्या होता है, रिवर्स कर देता है, तो 65432 सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डालते तो लास्ट में 353 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके अपडेट 3 पे जाते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसके बाद फिर डाउट सॉल्विंग जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, सिर्फ बकचोदी करें। फिर लैब यूनिट 1, इसमें थोड़ा सा मतलब दिमाग खराब होगा,
रिलेटेड पे फाइनली आ गए अपने। फाइनली लेट्स डू दिस। डिफरेंट कैपिटल अपर कर देते तो मतलब पर्पस और ये पूरे को अपर ही कर दे। ओके मतलब अगर मैंने डाला ABISH सभी अभी तो ये पूरे को अपर कर दिया। समझ गए। अगर मेरा क्वेश्चन मार्क करो तो ये इसका कैसे काम करता है बताओ। सिग्नेचर प्रिंट है आर्ग्यूमेंट सेपरेटर एंड ये आप डाल सकते हो। सेपरेटर डिफॉल्ट स्पेस एंड में कुछ डाल सकते हो। टाइप बिल्ड मेथड लेंथ क्या है लेंथ कैलकुलेट करता है। print the value string dot sys out। ओके टाइप एक बार डी क्यू भी देख लें। फ्रॉम कलेक्शन जब डी क्यू क्यू डिपेंड डी क्यू ठीक है। फिर डॉट अपेंड होता है पॉप लेफ्ट होता है अपेंड होता है पॉप होता है बस। ठीक है। अब भाई साहब दिमाग खराब हो रहा है दोनों पड़ेगा। फिर ये डाउट सॉल्विंग है। डाउट सॉल्विंग फास्ट ये 1 2 3 दिमाग बहुत टाइम लेगा बट वो एक बार हो गया ना तो फिर जो आगे है जितने भी है स्टिल बैक प्लॉट ले पार्टनर्स बैक प्लॉट सब सब जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि वो सब कैसे है कि मतलब वो सब सिंटैक्स पढ़ना करना सिंटैक्स वंस दो साल डर ना फिर हम बैठ कर असाइनमेंट्स करेंगे 1 to 10 के। फिर पी वाई क्यूज में से अगर इजी से कोड लग रहा है जो भी है फिर बैठ के हम बैठ के फिर क्या बैठ के देखते हैं और क्या। मतलब वो मैम ने जो क्वेश्चन दिए थे वो ट्राई करेंगे। सब खुद से ट्राई करेंगे ऑनलाइन ट्राई करेंगे कम देखना है जो भी अभी सीख रहे हैं उससे दिमाग सा खराब हो रहा है। ठीक ओके let's I'll just wash my face and
ओके, तो मैं थोड़ा देर में ना एक ये कर रहा हूँ। तो फिर मैं सोचू सारा कैमरा आ गया। हम्म, तो तो मैं अभी थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए ना I think a lot of this is very same रैंडम। ठीक है, ये तो बेसिकली इसमें से एक ले लेगा या इसमें से एक ले लेगा, ऐसे करेगा वैसे इसमें। भाई साहब, ए प्लस बी प्लस सी डिफॉल्ट है। ओके, दिस cannot happen। डिफॉल्ट मतलब बी 10 ऑलरेडी दे दिया था ना, तो इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू अगर 30 आते हैं। तो 3 डाल के तो क्या होगा कि डिफॉल्ट ऑलरेडी है, तो भी 20 देगा, 20 लगा डिफॉल्ट के बाद दे देंगे। ठीक है। दारू दे, दारू, 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 दारू रे।
I think this will work, right? What do you mean by that? I don't understand. Okay, got it. So it should be
What if that's a problem? What is the actual problem? The function x is 0, I'm going to call. What? Okay, so if I just, but then, what if I just do this? Dict underscore names. This doesn't make sense because that's the problem. But Pendulum. Okay, whatever. Mm. So I'm not there. Yeah. Nice. So polynomial plant a class. Class and objects are if I want and do it still much better. So class and objects takes it and then doubt solving is like really not that. So just 1 or 2 minutes time. So not everything. It's just yeah, this. Second. Okay. A is equal to 3, B is equal to 3.5, C is equal to ABC, class name of class student Raju, name है Raju, Ma, Raju is equal to student, Raju dot name would become Raju. Here I have to define it first, as I've defined it over here. Then over here relational Raju equals 2590. This is a variable. Raju is not this Raju, but it's a variable as well. Fine. This it's a way of I think let's say timeout. Okay, this is kind of tough. This is I won't lie, this is quite particular.
And there is a problem, right? Student Raju, 8 marks. Hit what? Get underscore data growth. Get one dot get underscore details. Get it. Okay, so it was gonna happen. So what has happened? You know what? I'm gonna be stopping the stream for a while.